एकदम वो काउंट दे दो मैग्नेस, ओके? एकदम वो काउंट दे दो मैग्नेस, ओके? हाँ, okay. So, greetings and a very hearty good evening to everyone present here, guys. Bum bum bum, swagatam. This is your IGP here, present here today. We are going to be presenting about today's podcast about the game Sekiro Shadows Die Twice. So, with me here are my panel members, hashtag gaming, Hello. H Night, and Hey guys. for the first time coming up on our IGP podcast is the Rando Rookie here, Hello. Thank you for having me here. and along with our media handler Magnus Viper. So we are going to be talking about Sekiro Shadows Die Twice. So to give a short introduction to the game about Sekiro, it is a 2019 action adventure game made by From Software Games and published by Activision. It also tends to be quite an amazing From Software game, as we all know back then in the day. बहुत लोगों के लिए वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा like playing the Dark Souls games, tried a bit of Bloodborne and a few etceteras. And now considering the arrival of Elden Ring in 2022, what's there? What else isn't there to talk about this particular game? So we will be covering about various different topics such as the scenario of Sekiro, the different types of NPCs, boss fights, the combat situation, how the developers had done with the physics of this game, and if possible, a small journey. A small journey about every user's experience throughout their time of Sekiro and their epic boss battles that they have done throughout their game time. So, first off, let us have a brief view about everyone's journeys here in this beautiful masterpiece that was made by From Software Games. So, H Knight, here's my question to you, bro. How was your experience in Sekiro? It wasn't really something special, let's just say. Not the game itself, but the journey. So I didn't really knew about Sekiro back in the days. One of my friends was like a hardcore From Soft fans. He played every Souls game and he was excited about it. So he told me about From Soft, Dark Souls games and all. And when Sekiro was first announced, it wasn't really a proper teaser. There was just like 31 second of teaser and there was a title Shadows Die Twice. So many of the fans thought it was Bloodborne 2 because Bloodborne was just released that year, and so they thought From Software basically announced Bloodborne 2. And after some speculation, after a year passed, From Software finally announced the game as Sekiro Shadows Die Twice. It was pretty different compared to other Souls games, but I wasn't really interested in them because at that time I haven't played any of the Souls games and I didn't know much about FromSoft. So never really interested in that game until 2020, I guess. So after the release of Devil May Cry, I was itching to play another action adventure game that can give me that kind of hype moments and all. And I just randomly picked Sekiro, and after first 15 minutes of the game, yes, I was absolutely hooked with it. Especially the deflect and parry thing. That was like my first experience of any of the FromSoft games. So I haven't played any of the games previously. So it was first for me, and I really liked the how was the parry system. It was the like basically essential to the gameplay, and it was hard, of course, for the first few try. I tried like in the first area of the game. We basically face a mini boss in the first area before crossing the tutorial option, and I died like multiple times to that person. And yeah, like I wasn't really interested in that game. I just started randomly. I thought it was, yeah, it won Game of the Year 2019. It should be great, as everyone said. And yeah, I found out in my first 15 minutes to half an hour of the gameplay. Yes, it was a great start to the game, and yeah, I was hooked at that moment. But I haven't completed the game at that moment. I'm still playing it. I still haven't completed it. I basically picked the game again recently so I can join this podcast and all. And I think it has. I think I'm liking it a lot more compared to what I did in 2020 because I have more experience with FromSoft games now, and I played Demon Souls, the OG one, and Dark Souls just recently, and I think I'm liking this game a lot more compared to back then, and again hooked to it, and I think I'll complete it finally this time around. And yeah, Really, that not is a bad, all. not a bad first attempt story, Night. No, I just have a few questions. Was that mini boss that you mentioned, Yamauchi, the I leader don't Shigenori really. Yamauchi?
I don't really remember the name. I think it was before the Ishin fight, when we first fight Ishin, before we lost our arm, basically. Ah, that I was think. Genshiro, not Ishin. Ishin's his father. The guy you fight in that, who when you lose the arm, is Genichiro. Okay, that is Kenichiro. Genichiro is actually Ishin's son, whom you fight at the first sequence. Yes. Basically, players who actually fight him, they have that feeling. अरे यार एक बॉस को इतना ओवरपावर कैसे करेंगे फर्स्ट बिट पे but some people have like found out a side story behind it, like how do we say a side cutscene, like when you defeat him for the first time एकदम एक अलग cutscene आ जाएंगे ना, like he tends to Sekiro tends to overpower Genichiro that first bit if you like successfully finish off that first boss battle. But understandable because it was not your typical bread and butter for everyone's first time gameplay. They had addressed in a very different sort of physical approach. Like the combat physics were quite different, and they had emphasized more on the stealth and exploration bits as well, equivalently. So it's a really nice first story bit for you, Knight. So if And we defeat Ganshiro in our first tutorial boss fight, basically, does the game end there? Like no, similar to No, DLCs no, and no, all? no. it does not end there. It's the same cutscene, like how what will happen when you lose the arm, but in a different manner. Oh, Say, understood. like Sekiro will tend to overpower Genichiro that first bit, and then later on, out of nowhere, one of the Nightjars will tend to launch his blades at Sekiro, giving Genichiro an opportunity to cut off the arm. So there's So basically a different cutscene for that that's a specific different cutscene scenario. for this. So Cool, this is like interesting. this is another interesting bit about this. Like if there's Uh, not one way to do, there's obviously another way. that's really cool when developer puts that much effort in something different. Like if you beat that guy, you will have a different cutscenes. Basically, I really found that really interesting and cool. You can actually easily do that in your New Game Plus when you have all your upgrades there. So I might try it in my NG Plus. I might you try you that. you should definitely try it because New Game Plus is a completely different experience. I just tried it out recently, so and I'm having a great time with that. Very well, Knight. Thank you for your sharing out your experience, bro. Rando, now here's my question to you, bro. How was your journey and experience throughout Sekiro so far? Journey and experience. So, well, Sekiro, my first time I played it on 2019. That was the year when I first bought my PC actually. So that this is the first game that I started with, and I got introduced to it through YouTube compilations, those race compilations. I used to watch those a lot, and I was like, when I saw people getting obliterated, like getting owed by everything in this game, I was like, yeah, I need to play this game. I need to check out how hard this actually is. I did not know that this was a From Software game. मुझे पता नहीं था ये From Software का game है. बस मुझे लगा कि हार्ड गेम है तो ठीक है ट्राई करके देखते हैं. ट्राई किया एंड भाई स्टार्टिंग में तो कुछ भी होता ही नहीं था, एकदम मार खा खा के हालत खराब हो जाता था. उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब जो फर्स्ट एरिया था अशिना आउटस्कर्ट्स वहां पे मैंने बहुत देर लाइक फॉर 2 whole days आई जस्ट प्रैक्टिस इन दैट एरिया कि डिफ्लेक्शन परफेक्ट करना है जैसे भी, उसके बाद आगे बढ़ूंगा. एंड इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग इनिशियली बट आफ्टर गेटिंग द डिफ्लेक्शन राइट इट वाज वन ऑफ द गॉडली एक्सपीरियंस ऑनेस्टली. सेकिरो खत्म करने के बाद ऐसा हो गया कि गेमिंग स्टार्ट ही किया था लेकिन गेम खेलना छोड़ने का मन कर दिया क्योंकि बिकॉज नो अदर गेम वाज एबल टू गिव मी दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सेक्रेटरी खत्म होने के बाद मैंने Assassin's Creed Origins ट्राई किया और कुछ गेम ट्राई किया बट आई जस्ट ड्रॉप इट. 1 घंटा खेलता हूँ ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है. So Sekiro was that kind of experience. It's just a different kind of power fantasy. It is a power fantasy. It's just the difference is that for that to achieve that power, we need to work for it, and that hard work actually when it pays out, it is very satisfying. Nice, nice, That's Rando. my take. And yeah, speaking about that experience, like जिस पे आप you tend to practice with the deflex, that is something I too can proudly say I shared out that experience here. But before we get to my experience here, I believe I forgot to mention one thing to H Knight. First of all, H Knight bro, I wish you all the best in completing Sekiro. I believe this is your first gameplay as you had mentioned before. It's not really my first. Like I have played it before, but I think I'm better at now.
compared to when I first played it. I think Like, I'll so wait considering it. like this is your first official gameplay throughout the Yeah, this is studio. my first official gameplay. Yeah, let's just say that. Yeah. So I wish you all the best for that. I forgot to mention it out prior, but still, nevertheless. So hashtag bro, moving on with you. How was your journey Yes, and experience? my journey was amazing. मैं सबसे पहले जो सोल्स गेम खेली थी दैट वाज ब्लडबॉर्न बैक इन 2021 एंड हमेशा से जब भी मैं सोल्स गेम्स के बारे में सुनता था मेरा यही ओपिनियन होता था कि क्यों कोई ऐसी गेम खेलेगा, लाइक व्हाट्स द पर्पस, खुद को पनिश क्यों करना है। एंड बस एक्सक्लूसिव थी कि मैंने सोचा मैं PS4 लिया है तो उसकी सब एक्सक्लूसिव खेलूंगा, इसलिए मैं ब्लडबॉर्न स्टार्ट कर दी। इसलिए नहीं कि डार्क सोल खेलनी है, बस इसलिए कि एक्सक्लूसिव है PS4 की। एंड ब्लडबॉर्न जब खेली तो दैट वाज फॉर मी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेम्स एवर दैट आई हैव टच्ड। उसके बाद मेरे को लत लगी कि मेरे को सोल्स गेम खेलनी है। आई आई कंप्लीटेड एल्डन रिंग, आई हाफ कंप्लीटेड डार्क सोल 3, बट देन उसके बाद मैंने स्टार्ट की सेकिरो। एंड जब सेकिरो स्टार्ट की मुझे लगा जो मैंने पिछली सोल्स गेम खेली है उसका जो मेरे रिफ्लेक्सेस हैं, जो स्किल्स हैं वो कैरी ओवर होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच वंस अगेन एंड आई वाज एब्सोल्युटली डॉग शिट टिल द लास्ट 1 आवर ऑफ द गेम। मतलब लास्ट के 1 घंटे तक मैं बहुत गंदा खेल रहा था उस गेम को, अच्छे से नहीं खेली जा रही थी। एंड जो एक्सपीरियंस था बट ना कि एक बॉस को मार दिया 50 बार मर के, वो डिफरेंट लेवल का था। मेरे को आज भी एक एक बॉस याद है, भले मंथ हो गया, एंड आई डोंट थिंक आई ever forget the kind of experience Sekiro gave me. So for that reason, I'll say I absolutely love Sekiro. Nice one, hashtag. Really nice. And now, like for me to share my experience with you guys, the audience as well. Um, Sekiro was literally not my cup of tea. I'll be honest about this one bit. The reason because of this is that this is my first ever Souls game. The second one being Elden Ring. When I had first started playing Sekiro, the first thing I clearly remember doing was checking out for a graphics check because since I had an MX250, I did not want to encounter any bit of the lags firstly because बाद में मेरे को पता चला that this game is even more difficult than the Dark Souls franchise, 1, 2, and 3 combined. And Thora, like with a bit of a cross-check analysis, I downloaded the game, got it finally, started playing it as well. The first thing that came into my mind was the setting. इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल वाले एक सेटिंग है कि that From Software managed to like turn a 16th century feudal Japanese setting with a bit of its frictional elements, थोड़ा एक fantasy setting के साथ how they brought in an involvement of different samurai clans amongst a realm of godlike creatures roaming about freely, and उसके बीच में ये सब एक story that revolves around one protagonist जिसका नाम है Sekiro. And when you like immerse yourself into Sekiro, right, that's when you get to know how not only beautiful the world is, but also how tough the game tends to be for a first time gameplay for gamer. So for during my experience which I encountered, I had remembered just like how our panel members had discussed, especially जब वो Ashna outskirts पे when you rescue Kuro from the tower and when you get your katana for the first time, right? बाद में when I encountered Yamauchi for the first time, जो वो बंदा गेट पे होता है ना, leader, Yeah. I ended up dying at his hands more than 10 times. And भाई बंदा like मेरा दिमाग इतना खराब चुके थे, like I was like, oh man, what the heck am I gonna do? So like थोड़ा practice मैंने तो की, deflections मैंने तो practice की. I eventually realized कि हाँ, blocking is not the key in Sekiro here. It's all about deflections. Your ability to deflect, your ability to use the environment to your favor and advantage, your ability to understand an enemy's patterns. This was another thing I had noticed, which was pretty much amazing actually. Because अगर एक samurai या एक shinobi के life पे देखते हैं ना, especially अगर एक shinobi पे देखते हैं, even if I could recall in Ghost of Tsushima, they will like focus mostly on these tidbits, like bits and bobbles of the gameplay's physics. You will have to understand an enemy's patterns before you tend to go on the offensive. So the one thing I remember doing on my PC gameplay was that मैंने trainer use की. I'll be honest, it was not typically like this thing, like how do you say, like करनी पड़ेगी थी ऐसे नहीं, but I remembered using it. थोड़ा health तो infinite पे लगवा के I practiced on the deflects with the major bosses. Like पहले वाले bosses उतना progress नहीं की. So I practiced on the deflects as much as I can.
at Ashina Outskirts. And बाद में एक clean proper save file पे I started the game, no trainer help. I finished off the game and बाप रे क्या वो excitement मिली. That after Satisfaction. satisfaction that after a long time you have finished a really difficult game. And after finishing the game, I even did check out on YT that a few people like जब वो game को test कर रहे थे, the testers had wanted a save file जिसमें Sekiro की attack level and vitality and posture was to be at max. They wanted that sort of a setting because initially they found it difficult. They found it actually difficult to play it like during the testing. जब वो E3 gameplay होती है ना, like during those times पे they did find it difficult as well. So I'm just happy like कि हाँ, I just shared out the experience and not only that like कि हाँ, how do we say? एक certain level of satisfaction कि हाँ, I too like finally have played a Souls game. I haven't touched the Dark Souls 1, 2 and 3 yet, but considering that Sekiro was my first ever game, the Souls game, to be honest, it felt really satisfactory. That कि हाँ, एकदम In my opinion, एक गेम पे जिसमें blocking was not the key, deflection was the key. I felt happy to have completed such a game like this, and especially a game set in feudal Japan. मेरे को इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है. I think as your first Souls experience, you did amazing because I think this is the hardest FromSoft game we have so far. Because you can cheese Yep, other games as agreed. well because they are RPGs in the end. You can cheese those games by leveling up at all. But this game requires pure skill. So yeah, And considering about the RPG setting here in Sekiro, it is very limited if I'm not wrong. Yes. Like even like Yeah, you RPG it's is can't very limited. limited. like ऐसे नहीं है कि like Witcher or Skyrim पे you can interact with many NPCs. I mean इसमें भी you can, but not to a level कि हाँ like you have multiple dialogues या ऐसे ऐसे नहीं है इसपे. What do you guys think would how would it would have been like ये होना था या नहीं होना था? It was perfect as it was. I think it is perfect as it is. Regarding NPC interactions and stuff, it is perfect as it is because गेम का फोकस ही ऐसा है ना कि यू नीड टू एक्सप्लोर, यू नीड टू बी क्यूरियस टू एक्चुअली गेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गेम. लाइक जैसे अभी जो जो डिफरेंट एंडिंग चाहिए उसके लिए ईवड्रॉप वगैरह करना पड़ता है. So you need to be have the level of curiosity instead of just being handed out to you. And based on how the entire game is designed, based on completely player focused mechanics, like player को ही सब कुछ करना होता है. In that place, like I believe this was actually a good way to go because again the entire power is given to the player. They can do whatever they want. Agreed. If you want to just play the game, you focus on the gameplay, you can focus on it. If you want more story, you can basically explore the game and find more about it. So it's perfect design, game design, at least from my perspective, because FromSoft games are mostly about gameplay. That is the main reason people play those games, and I think it's fine as it is. And it is still like the most story-based experience from Software, and you basically get the entire story even if you don't try to go out of your way and try out all the endings and all. You still get like a complete package and the entire story from finish, from start to mid to end. Like you don't have to explore everything compared to other Souls game. If you want to know the lore of the world, like explore, read about description, item description and all, you'll still get the entire story. Nice. बस एक एक चीज पे एंटायर स्टोरी नहीं मिलती है. अगर शूडा एंडिंग कर दिया तो आधा गेम ही मिलता है वहां पे. I think that's the baddest ending type, like bad ending of the game. Yes, it Yes. is actually a bad ending. But before let's get to the endings later. So guys, let us move upon with the next topic. How does Sekiro stand out as a Souls game from the other stuff from software games? So my first question will be posed out to Rando. So Rando, you have experienced Sekiro and you have shared out your experience as well with us and to the audience. So as a gamer and an experienced user, how would you feel as Sekiro standing out from the other from software games? आई मीन अगर देखा जाए तो एक बार मतलब सेकिरो इतना अलग गेम है ना कि यू कैन एक्चुअली सी द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ फ्रॉम सॉफ्ट एंड मियाजाकी's टीम मेंबर्स देयर. क्योंकि देखो जो डार्क सोल्स या फिर डीमन सोल्स और या इवन फॉर ब्लडबॉर्न जो जैसा उन लोगों का फॉर्मूला सिस्टम चल रहा है
उसको कंप्लीटली मोर और लेस चेंज करके एक कंप्लीटली एक्शन ओरिएंटेड गेम बना दिया है एंड ओनली बॉट इन वन और टू फीचर्स फ्रॉम दोज टाइटल्स लाइक फॉर एग्जांपल जो बॉनफायर सेटिंग्स है वैसा कुछ 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 से चीजें आया है बट अदरवाइज अदर देन दैट द एंटायर सिस्टम को चेंज कर दिया है वहाँ पे रोलिंग के जगह अभी वी नीड टू बी मोर एग्रेसिव एंड आल्सो प्ले डिफेंसिवली डिफेंसिव ऑफेंस दैट्स द वर्ड आई कैन से एंड लाइक उसके हिसाब से जो उनको गेम डिजाइन भी चेंज करना पड़ता है so Sekiro is a complete different experience because it focuses more on the offensive side of the combat while at the same time being defensive. It's a very critical kind of thing. It's hard to explain because आपको अटैक करना होगा लेकिन at the same time वो लोग जब अटैक करेंगे वापस you need to react in their perfect timing. अभी डार्क सोल्स पे क्या होता है कि जब रोल करते थे या फाइन ठीक है रोल करने से इट हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ विंडो बट ये डिफ्लेक्शन पे जो डिफ्लेक्शन मैकेनिक आया है यहाँ पे विंडो बहुत छोटा होता है एंड दैट एक्चुअली इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल फॉर ऑल प्लेयर्स एंड स्पेशली फॉर डार्क सोल्स वेटरन्स जो मतलब डॉजिंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए ये पार्ट बहुत हार्ड हुआ था एज फार एज आई नो क्योंकि मतलब वो लोग डॉज करने के ट्राई करते हैं जो ब्लडबॉर्न का डॉज है सेकिरो पे वो डॉज करने का ट्राई करते हैं लेकिन डॉज होता नहीं है बिकॉज देयर प्राइमरी मेथड ऑफ डिफेंस इज द डिफ्लेक्शन so it was a complete shake up to the entire genre and yeah it actually shows how creative and well rounded the development of game developed by from software can be. You mean to say that they have not only like focused on an offensive pattern, but they have also balanced it equally with a defensive strategy? Yes, exactly. It's a nice balance between offense and defense. जैसे once again जैसे Dark Souls पे हो गया, you mostly stay on defensive. Like बॉस अटैक करेंगे उसके बाद आपको डॉज करना पड़ता है डॉज करने के बाद उस विंडो पे आपको अटैक करना पड़ता है दैट्स द पैटर्न ऑफ डार्क सोल्स इन सेकिरो दो हाँ यू कैन वेट फॉर द बॉस और द एनिमी टू अटैक एंड देन यू कैन डिफ्लेक्ट वो कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम इट्स मोर बेनिफिशियल कि आप जाके उसको अटैक करो and then he tries to deflect and counter you and you counter that attack once again to get the most benefit out of it. Interesting. And H-Knight bro, as an experienced user, gamer, how do you feel that Sekiro stands out as a game compared to the other From Software games? It is a completely different beast compared to other FromSoft games. That's for sure. For example, FromSoft is developers who are used to like make Armored Core games and some old Eastern Fantasy games back in the days before Souls games. And ever since Demon Souls, they are mostly focusing on Souls experiences. And Sekiro was the first big departure for them after Dark Souls series. And this is a completely different game. It's more of an action adventure game compared to RPG, something like Dark Souls series of Bloodborne. And there is like a lot of interesting behind the story things about this game. For example, एक concept था Sekiro का basically it was started as a sequel to Tanshu. That is another ninja-based series. One of the game was developed by FromSoft, from what I remember. So it was started as a sequel to Tanshu series. But then Miyazaki thought, okay, no, we can't satisfy Tanshu fans because it is something different. So they just basically scrapped the idea and started from scratch, and they thought we'll basically make something different. And compared to Souls game, it is definitely completely different experience. For example, FromSoft RPG had this is action adventure game. Settings are completely different. Most of the FromSoft games, even the old ones, like what was the original FromSoft game? Basically, all of them, most of their games are like set in Europe, medieval fantasy, and this is basically their second game, I think, after Tenshu, जो Japan में set है, especially in Sengoku era, which was like a good mix. We can say the Sengoku era is basically medieval time of Japan. 16th century feudal Japan. To be Yes, precise. it's basically medieval Japan. And I think this was the perfect time they set the game in because you can take the fantasy elements and the real life history and put them side by side and make something interesting out of it. So it was set in Sengoku era जहाँ पर mostly काफी violence थी, काफी civil wars से Japan में. So they definitely pick a great setting for the game because there were two settings they were confused between. One was Sengoku era and I think second was Edo era. I don't know much about True, true, Edo era true, personally. true.
So Yeah, Edo era was like during the time when in actuality like वो 1600s पे हुआ था ना siege of yeah, Osaka. yeah, it was like उस a starting हाँ of modern Japan. हाँ Like उस टाइम we, पे हो रहा था actually like it all started during that time during the siege of Osaka as I had mentioned like between the Tokugawa clan and the Toyotomi clan after Hideyoshi's passing in 1598 ना उसके उस टाइम के बाद ही and yes guys finally after a long time RP sir is back on the stream. What's up, Hello. sir? Hey, yeah, welcome. Thank Hello, you for hello, joining. hello. hey, Hello, Yes, sir. Rendo, hello, Kaarthekeyan, hello, H Knight, hello, hey RP. hello, hello. और ये So, हमारे प्यारे क्या नाम है इनका Hello. Magnus, हैशटैग गेमिंग Hello, अरे Arpita. गाइस पता नहीं है RP मैं sir, कैसे भाग भाग कर आया हूँ आई वाज नॉट एट माय होम टू so सो RP एक्सट्रीमली sir, सॉरी we फॉर are द like not a या problem. We are like covering about how Sekiro stands out as a game from the ओके other software games. But उसके Mhm. पहले Knight, are you done with the sharing part? yep There, there are a few more things I want to talk about. So Yeah, basically, sure, sure. this is a completely different beast compared to previous Souls games. A different setting, completely, and different mythology. For most of the time, वो mostly Eastern European fantasy में ज़्यादा focus करते हैं. Mostly inspired by Berserk and other Dungeons and Dragons inspired things. And yeah, Sekiro is a completely different game compared to previous Souls games. And as I've said before, it's more of an action adventure a game compared to Souls games, which is more of an RPG series. I mean, it is RPG series. And yeah, I think these are all the things I really want to talk about right now. I don't have much more behind the scenes talk things to talk about this game. या Nice one, Knight. RP sir, please या do share out your experience of the Sekiro's gameplay during your time, या and along with that, if possible, how this game particularly stands out from the rest of the From Software games. okay okay so first of all I would like to thank Karthikeyan for handling the coordination part today. It really means a lot, and you did a great job, to be honest. And extremely sorry, guys in chat as well as in the panel, as in the panel stuff as well, because I was busy today, extremely busy. I don't know मैं कैसे इधर आया एक टाइम से मुझे लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा बट somehow I managed to do it. So thank you everyone for the support. And yes, तभी आज थोड़ा सा डिले हो गया था पॉडकास्ट. So Sekiro, Shadows Die Twice. A very special game, to be honest, when it comes to Souls series. To be इसको Souls तो नहीं बोलेंगे, it's a completely different process. तो मुझे अब तक याद है मेरा नेफ्यू है एंड वन ऑफ माय पैनल मेंबर वाईजी रॉक्स एक्चुअली उसने पहले सकीरो खेला था. एक्चुअली मैंने ब्लड बॉर्न किया था अपने चैनल पे, तो उसके बाद उसके चैनल पे सकीरो जो था वो फर्स्ट गेम था. तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि मामा आप सकीरो खेलो, यू गोना लव इट. तो मैंने बोला ठीक है, आई ट्राई. तो जब मैंने खेला इस गेम को, इट रियली किक्ड समथिंग एल्स इन मी, टू बी ऑनेस्ट. जिस जो इसका फीचर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बियंस और लेवल डिजाइनिंग बहुत जबरदस्त थी इस गेम की. इफ यू आर in Hirata Estate, you will feel that depression, that violence, that atrocities. If you are in, you can say in Bodhisattva area, you will feel a different gist where monkeys are attacking you, where you will find guardian apes, as well as in a Ashina castle, you will find something really out of the box, like the Ashina style ambience and all. Yeah. RP sir, just sorry for the disturbance, but some few users are saying that your camera is not visible on stream. Camera is not visible. Wait a minute. Like it's here on Discord, but on the YT stream it is not. Now is it fine? Just let me know. Rando, could you please let us know, bro? Yeah, I'm checking the Like camera is still off. It's not same here, showing. It is same not here. showing. Yeah, it's not showing. Not Wait, It's showing, not did showing you on cancel YT, with but here Karen? on Discord. Discord it's here. On Discord it's here. okay, wait a minute. I'll again rejoin. Some small technical issues, guys. We'll be back with you in a few minutes. Um, a viewer is suggesting that the OBS operator have to click on it. Click on RP scan. Please.
Now, let me know. Nope. No. My voice No, is it's not. वॉइस आ रही है लेकिन वो कुछ वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ YT पे वीडियो नहीं आ रही है. ठीक है, चक्कर है. ये we are getting a suggestion that OBS operator पे क्लिक करना पड़ता है. Okay, now it's here. हाँ आ गया It's आ गया fine आ now. गया It's आ Okay, गया fine आ okay, now. गया yeah. आ गया आ Okay, गया. okay, okay, okay. So, coming back to the point, to be honest, earlier I've played some of the Dark Souls editions as well as played some of the. I've played Bloodborne. So, अभी तक जो हमने witness किया था from Soft में, that is totally different to what we witnessed in Sekiro. It's a completely different game जहां पर आपको सिर्फ आपके मूवमेंट्स पे ही नहीं, आपको अपनी स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट. सकीरो में, यस, ब्लडबॉर्न और डार्क सोल्स में भी स्किल्स लगते हैं, बट सकीरो इज कम्प्लीटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू स्किल वाइज. बिकॉज क्या होता है कि जैसे अगर आप सोल सीरीज पर हो तो वहां पर क्या है, आपके एट्रीब्यूट्स पड़ते हैं, यू वर्क ऑन योर एट्रीब्यूट्स. Let's say if you're playing Elden Ring, you'll have a bleed build in your arsenal, you'll have the magic build in your arsenal, or you have a strength build in your arsenal. But Sekiro is like, उसमें जो आपका करेक्टर है वुल्फ, he is one of the most, or you can say the most badass characters ever made. And आपको खुद एज अ प्लेयर इवॉल्व होना पड़ता है. आप अगर आपकी डिफ्लेक्शन स्ट्रांग है, लिटरली योर स्ट्राइक डजंट मैटर, your level doesn't matter, it's just the deflection. If you know the deflections, you can beat the bosses, you can beat the game. But at the same time, there are some bosses जहां पर डिफ्लेक्शन ही अकेली काम नहीं करती, वहां स्ट्राइकिंग भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स से if you go by the guardian ape, if you playing it for the very first time, उसके बाद तो आपके पास अगर prosthetics है आप कर सकते हो उसको, या फिर if you're going with the demon of hatred, that guy literally requires spam, to be honest. तभी आप उसको डाउन कर सकते हो. सो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा सकीरो वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और मुझे नहीं लगता कि कॉम्बैट में दूर दूर तक अभी तक मैंने कोई ऐसा गेम देखा है जो इसके पास भी पहुंच जाए, टू बी ऑनेस्ट. गोस्ट ऑफ सुशीमा मैंने अभी खेला नहीं है, बट सकीरो के लेवल को मैच करना, मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा मुश्किल है. बिकॉज सकीरो का जो कॉम्बैट है, आप सब जानते हैं, सबने यहाँ पर खेला हुआ सकीरो कॉम्बैट जो उसको हिट करता है, इफ यू डूइंग द परफेक्ट डिफ्लेक्शन, दैट टंग आवाज इन योर ईयर्स, it really gives you the gist to move forward in this game. So overall, it's an amazing game. My journey was amazing when Yatharth suggested me this game. I played this game, I loved it, and literally मैंने NG+11 तक इस गेम को खेला था. Bloodborne मैंने +9 किया था, लेकिन मैंने इसको +11 कर दिया था. So it's like replayability इस गेम की बहुत अच्छी है. Secondly, मैं बोलूंगा how it is different from the other Souls series or the From Software editions. मेरा आंसर एक ही है, it's Sekiro. यही इसका आंसर है. और कोई कहते हैं ना नाम, if you don't have iPhone, you don't have iPhone. You don't have Sekiro, you don't have Sekiro. Identity. Yep. It's only the name which is enough. वो काफी है इस गेम को सिर्फ ये Brand बन बताने गया के है. लिए कि why it is different from the other series. It is Sekiro, Shadows Die Twice, that's it. और अगर आप किसी ने नहीं खेला चैट में गेम, so please do play this game. You are missing something really important. हाँ, उस पे वो Steam पे डिस्काउंट भी चल रहा है अभी 50%. Yeah, It's 50% on discount. sale right now. Summer Yes, sale. yes. अगर बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए तो please contact Asad Raut in our Discord. He'll give you disc or Steam account for free. Okay. Guys, so So as Rafi sir mentioned, a game को एक बनाने के लिए it's not just the gameplay or a setting or all the other stuffs and gizmos that it can provide, but it's the identity. As he had mentioned, the name itself can speak out everything. exactly So वही चीज. so moving on तो to the यहाँ, next. yeah. So हाँ, I'll take forward from this time and thank you Karthikeyan for doing the coordination till now. So okay. guys, जैसे कि कार्तिकेयन ने यहाँ पर आप सभी को, with all the panel members, first of all I would like to thank you everyone for coming and sharing your time. So यहाँ पर guys, जैसे कि हम सब ने अपनी जर्नी बताई, आई थिंक ये सारी क्वेश्चंस पूरे कवर हो गए थे कार्तिकेयन. Me and Ayush have to cover up with the this thing. How does it stand out? Okay. Experience So difference.
So I'll put it in a different way. Ashutosh. So I think ये कार्तिकेयन ने question शुरू किया था, तो I think Karthikeyan is the right person to end this. After this, I'll take forward this chat and please, yes. Okay, so Ayush bro, hashtag Who is you're as an Ashutosh? expert as an okay. So as an experienced gamer and having played and completed Sekiro, how do you feel that Sekiro stands out from the rest of the From Software games? Well, Sekiro has an extremely different vibe, I'll say. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वो लगती जरूर है सोल्स लाइक गेम की तरह, बट वो है नहीं. उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही अलग है. जैसा आरपी भाई ने कहा कि आईफोन है तो आईफोन है, एक सेकिरो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस है. ऑन सरफेस लेवल तो वही सेम है कि तुम चेक पॉइंट्स पे जा रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, वहीं पे रिवाइव हो रहे हो मर के. बट ऐसे जो उसकी वाइब और एटमोसफेयर है ना, वही इकलौती ऐसी चीज. और कॉम्बैट की है टन आवाज बताई. जब मैंने एशियन बॉस को मारा उसके मुझे सपने पड़ रहे थे वो टन की बार बार. जो मैं डॉज कर रहा था ना गेनिचीरो से लगातार लड़ लड़ के, वो जो डॉज की आवाज थी वो अलग ही चीज है. मतलब वो बहुत कम साउंड में वैसी फील दे सकते हैं. मतलब जैसी नोटिफिकेशन आती है ना मोबाइल में, ऐसा लगता है कि मैसेज किया किसी ने या लाइक किया. सेम उसी तरह की वाइब थी उसकी. टन की एक डोपामिन हिट मिलती है, मतलब खुशी होती है दिमाग में, एक अच्छा डॉज हुआ. और ये चीज जो है उनमें नहीं है. एल्डन रिंग में, डार्क सोल में या ब्लडबोर्न में वो इतना पैरी बेस्ड नहीं है. सेकिरो तुम्हें बैड एस बनने का मौका देता है, तुम्हें छुपने का मौका नहीं देता. जैसे एल्डन रिंग थी खेल रहा था तो मैं सोच रहा था क्यों ऐसे बनाई है गेम, क्यों डॉज कर करके खेलना पड़ रहा है. मैं ऐसे क्यों नहीं खेल सकता कि ऑल इन जाऊं, अटैक अटैक अटैक. अब जैसे ये सेकिरो, इसका फाइनल बॉस जो था, मेरे को इतने टाइम से नहीं खेल पा रहा था. फिर आरपी भाई ने सजेस्ट किया कि इसको सांस मत लेने दो. और मैं सरप्राइज हुआ कि वाह यार, ये गेम हार्ड है पर ऐसी हार्ड है कि तुम्हें मौका दे रही है कि तुम दूसरे की जिंदगी खराब करो इसमें, डेंजरस बन के. छुप छुप के मत लड़ो कि डॉज करो ये करो ना. अटैक 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 अटैक, सिंपल सा combat. Hesitation is defeat. हाँ, Just ये spam, चीज just बड़ी spam and अच्छी do it. थी. ये चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे इसमें कि तुम्हें ये लिटिल बिच की तरह ट्रीट नहीं करती. गेम करती है बट मौका देती है बहुत बैडएस प्लेयर बनने का. एक्चुअल समुराई वाली फील देगी तुम्हें. एंड ये मेरे को हर सोल्स गेम से अलग लगी. एंड मैं इसीलिए कहता हूँ कि सेकिरो बहुत डिफरेंट बीस्ट है अपने आप में ही. ये तुम्हें छुपके से नहीं खिलवाएगा, तुम्हें बोलेगा तुम जितना कर सकते हो, जितनी हिम्मत है उस हिसाब से घुसो. एंड इसके लिए तो सेकिरो बहुत ही लग है. बाकी वाइब एटमोसफेयर के बारे में अच्छा आपने पहले ही बता दिया, उस पर मैं कोई पॉइंट ऐड करना नहीं चाहूंगा. यस. तो जैसे कि अभी आशुतोष ने बताया कि आयुष आयुष आयुष, Yes. सॉरी मैं हैशटैग से जानता हूँ उसका नाम. तो Yes. आयुष ने बताया जैसे कि इसको किस तरीके से इस गेम ने डिफरेंट हिट किया. इसने जब इवनेशन से भी फाइट किया वो कुछ टाइम तक, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मेरे लाइफ में खुद ऐसी कई बार हुआ है कि बहुत कम ऐसी गेम्स होती हैं जब आप उसका एंड करते हो वो आपके जहन में रहती है. लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2. जब मैंने उस गेम का एंड किया, लिटरली मैं 2 हफ्ते तक मैं आई कैन काउंट दोज डेज, 2 हफ्ते तक आई वाज रिकॉलिंग कि मैंने उसमें क्या विटनेस किया. मुझे उसने अंदर तक कहते हैं झंझोड़ दिया था उस गेम ने. सेम गोज टू सकीरो. जब सकीरो खेला था तो मेरे माइंड में था, बिकॉज क्या होता है जब आप जब ये NG+11 कर रहे हो या NG+9 कर रहे हो, ये तब क्यों करते हो जब कोई गेम आपके आपके ना माइंड में इंग्रेव हो जाती है कि यस, कि अगर मैं इसको फिर से खेलूं तो मेरी क्या परफॉर्मेंस रहेगी इस गेम की. और क्योंकि क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है सेकिरो का कि जो इसमें डिफरेंट एंडिंग्स भी आती हैं, सो वो भी अटेन करना होता है. फिर और कॉम्बैट और अपना स्ट्रॉन्ग करना है. वैसे तो मैं थोड़ा बहुत मतलब अभी थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ सेकिरो, ऐसी बात नहीं, बट वो ये जो रिप्लेबिलिटी आती है ना उसमें, वो जो फील आती है, दैट इज टोटली डिफरेंट. तो मैं यहाँ पर सेम क्वेश्चन डायरेक्ट करता हूँ कार्तिकेयन को. कार्तिकेयन, मैं आपसे एक डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछता हूँ. Very well. आप खेल रहे हो, यू प्लेइंग एल्डन रिंग. प्लीज गाइस, मैं कोई कंपेयरिंग नहीं कर रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट एक क्वेश्चन को पुट अप कर रहा हूँ. आप एल्डन खेल रहे हो, यू प्लेइंग विद मिलेनिया. ओके, मिलेनिया का एक मूव, यू आप देखते हो कि मिलेनिया ऊपर से ऐसे Waterfall dance. रोल करते हुए Waterfall वाटरफॉल dance. डांस करते हुए आ रही है आपके पास. अब अगर आपको मन में एक फील आती है, यार काश मेरे पास यहाँ पे वुल्फ होता, लिटरली मैं इसके सब मूव को डिफ्लेक्ट कर देता. तो मैं इस नोट पे आपसे पूछता हूं, जब ऐसी आप कोई गेम खेलते हो और लिटरली आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि काश मेरे पास वुल्फ होता है इस मोमेंट पे, तो वो एक अपनी सोच बताइए उस चीज को लेके. और इसी बेसिस पे मुझे बताइए कि सकीरो ने किस तरीके से आपके माइंड पे इम्पैक्ट किया.
So first of all, regarding Millennials Waterfall Dance, Yeah. after a personal experience through Elden Ring and after seeing yours and Senpai Score, I was like wondering the same thing exactly. काश अगर वुल्फ होगा तो क्या हालत होगा उसकी उड़ा देता है वो उसको. उड़ा देता literally. The thing is, the credits for all of Sekiro's skills, considering the fact that he was initially an orphan who was just scavenging swords from the battlefield between the Ashina clan and the Tamura clan 20 years before, जो game की setting होती है. The entire credits not only go to Owl in a manner of speaking, but to Lady Butterfly as well, because it was she who actually trained Sekiro in the ways of the shinobi. Yep. तो अगर हमको इस एंगल पे देखते हैं कि हाँ इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट द गेम फोकसेस ऑन अ डिफ्लेक्ट मूव सेट नॉट ऑन अ ब्लॉक मूव सेट इट वुड फील अंडरस्टैंडेबल दैट कि हाँ बहुत लोगों को ये फीलिंग होगा कि लाइक व्हेन यू आर लाइक फाइटिंग मालेनियन एंड देन यू विल बी लाइक अरे यार ये कितना स्पैम कर रहे हैं आई फील लाइक रेज क्विटिंग आई क्या करेंगे तो मालूम नहीं बट देन यू इट्स यूजुअल टू हैव दैट फीलिंग that's how I could put it in this manner because Sekiro खेलने के बाद when you're like playing Elden and you see an NPC, a boss NPC, literally doing the same moveset as Genshiro, like वो भी ऐसे एक swing करते हैं ना ऊपर उठ के, so it's usual, it's like not just usual but वो literally वो एक nostalgic feeling आता है ना कि हाँ अरे यार क्या एक feeling मिल रहा है इधर से. Exactly. And to share out how this game stands out from the rest of the From Software games, um, when the game's pictures started coming out on the internet, I was like, बाप रे console पे कितनी सुंदरता दिख रही है कि हाँ they have like as Knight and Rando had mentioned before how From Software has blended in a 16th century feudal Japanese history with some fictional and some fantasy settings and made an amazing wonderful game out of nowhere. Like It's you just एक से एक झटका पे you just spawn it out of thin air. This amazing. game and after playing Samurai Warriors franchise from Techno Campus, right? उसका भी एकदम एक hack and slash game है, but it's based on the actual setting. This game made me fall in love with Japanese history way more. एकदम एक अलग level पे लिया मेरे को. Like I started delving deep into Wikipedia. I started learning about the feudal Japan. Abhi, I was just sharing out with the guys when you were coming about the siege of Osaka, जो real time पे हुआ The था. Edo era of Japan. Edo era as well. Okay. So if I have to conclude out as to how this game would stand out from the rest of the From Software games, it's okay to say that Elden may be the new hit of From Software in a manner of speaking, but as RP sir had mentioned, if you don't play Sekiro, you're not going to buy the experience, and the name itself would suggest out everything. And Exactly. from my end, trust me, this game would make you fall in love with Japanese history. आप एकदम खेलेंगे ना like कि हाँ understandable it's not the actual representation of Japan but थोड़ा वो elements लेके इस पे डाल दिए that's more than enough. It's like they have showed us the path to understand the Japanese era, the feudal era, as well as with that, they literally you can say that the icing on the top is the fantasy part in it. The way they have portrayed the fantasy part in this game. Let's say let's say a bull is running towards you with a fiery horns and you're deflecting that part or you using that father feather prosthetic and you're just going through with it, and so this literally gives a lot of feel while playing this game. So to be honest, it's a completely different thing. Yes, there are certain points which is to be portrayed in this particular podcast. We're gonna portray it as well. सिर्फ तारीफ ही नहीं होगी, थोड़ा सा जो पॉइंट्स हमें जो हल्का फुल्का लगा वो अपने एंड पे हम बताएंगे या किसी के कुछ पॉइंट्स हो तो डेफिनेटली वो बताना. तो गाइस टू बी ऑनेस्ट, ये तो सबने अपनी जर्नी बताई, सबने अपना एक्सपीरियंस बताया और ये बताया कि ये गेम क्यों सबसे डिफरेंट है, क्योंकि और लिटरली ये बात फैक्ट है कि सकीरो सकीरो है, उसका कोई तोड़ नहीं है और नहीं गेम ये खेला है तो यू हैव टू प्ले दिस गेम. और मैं जहां तक बोलूंगा इनिशियल स्टेजेस पे थोड़ी दिक्कत आती है. यहाँ पे मैं आई जस्ट वांट टू टेक वन पॉइंट ऑफ रैंडो just let everyone know that if a new player is playing this game,
if new player is playing Sekiro, is it user friendly? और अगर कोई नया बंदा है and he rage quits a lot, so is it a perfect game for him or her? I just want to know from you. एक्चुअली मैं सोचता हूँ ना, हाँ, अगर इफ यू हैव द हैबिट ऑफ रेज क्विटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, देन आई थिंक दिस इज अ गेम दैट यू शुड गेट इनटू, क्योंकि मतलब पेशेंस का ट्रेनिंग हो जाएगा पूरा Yeah. अच्छी तरह से। Exactly. Exactly. और मतलब सेकेंडली और एक बात है, या सेकिरो हाँ बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड गेम है, बिकॉज इट इट डिमांड्स यू दैट यू गेट गुड एट द गेम, but at the same time there is also the option of defense block spamming, वो काम Hmm. करता है। So even through that, you can actually get past most of the game, and by the time you reach the end of it, you will see yourself improving, and that will actually give you a sense of satisfaction. And also, again, it can actually increase your level of patience. And Exactly. so it's definitely, if you haven't played it, if you're a complete new gamer, कभी game खेला भी नहीं है, you should Hmm. definitely pick up Sekiro. From Software game भी कभी नहीं खेला, start with Sekiro, I say. Yeah. आपका जो टेम्पो सेट होगा, that will be perfect then. Exactly. So this is one important point from Rendo, that yes, if you are a newcomer, if you are new to gaming, if you're new to From Software editions, then Sekiro is the game to start with, and yes, it is amazing. So यहाँ पर guys, अब ये एक छोटा सा मैंने एक आउट पॉइंट रखा था जो कि मैंने रैंडमली पूछा रैंडो से, तो यहाँ पर अब हम लेकर आते हैं बात completely, we're gonna discuss about the combat part of this game, which is the soul of this game. Is yeah. So I would like to start with H Knight. Wait a minute. One is H Knight. One is Ayush. One is Kaarthekeyan. What is Rando? And the other one is Magnus. Magnus. Okay. He's okay. Okay. Hello, Magnus. So यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कॉम्बैट का पार्ट, और मैं एच नाइट से स्टार्ट करना चाहता हूँ. एच नाइट, you have played games which involves combat, but you've played Sekiro which involves a different combat. एक ऐसा combat जब हम start करते हैं तो हमारे fingers बटन को दबाने में हमें used to नहीं होते हैं, but at a certain point हम ऐसे आ जाते हैं कि yes, हम थोड़ा tackle करने लगते हैं. तो ये जो लर्निंग कर्व है, मैं यहाँ पर आपसे कॉम्बैट इसके लर्निंग कर्व के एस्पेक्ट से पूछूंगा. The learning curve of Sekiro when it comes to combat, as per you. It's very steep. The learning curve is very steep, especially for someone who's like starting with this game. For example, this was my first FromSoft game and it was difficult to play. Definitely. But it was fun as well. Because learning how to deflect enemies, how to like beat them in their own game, making them attack you and then deflect their attack and then stab them in the neck. Oof, the satisfaction. Yeah. The satisfaction. So yes, the learning curve is very steep, especially when you're fighting a new kind of enemy for the first time, a new boss. So you will definitely gonna die if you're not really experienced with the game, but you will learn as well. You'll die, you Exactly. will learn. So you Okay. basically learn small things and then defeat the boss in the end. For example, I basically played the game before the stream and I defeated the one mini boss who basically drinks some poison and throws at you. Juzo the drunkard. Who's the drunkard? He was a drunkard. So I basically लेकिन defeated उसके लिए him उसके साथ before लड़ा this था। stream. And it was, first of all, it was really hard defeating him because before that boss हमें multiple enemies से लड़ना पड़ता है, the arrow ones, the sword ones, and उनको stealthily kill करके उसके पास पहुंचना with full health and all the items. First of all, that part was difficult. Then you learn how to counter them, how to kill all of them stealthily, then reach that part. And then हमें एक samurai से मिलते हैं, then we like get his help fighting him, and after defeating all of the small ones, just focus on that big one. Like it was And to so be satisfying finally defeating that him. his name was Nagamuchi, and you have to bring him like you summoning someone in Elden Ring. And he, Basically, actually, the thing here is that ये बंदा literally one shot पे मरते हैं actually ये samurai. बेचारा. बेचारा. और लिटरली मैं बताऊं, मैंने जब फर्स्ट टाइम मारा था ना जूजो को, वो एकदम पीछे से भागता हुआ आया. मैं कहा भाई ये कौन आ गया. मेरे को पता नहीं था वो कोने में खड़ा होता है, बाद में पता चला. लेकिन लिटरली मैंने आज तक उसका यूज नहीं किया. मैं कहा भाई तू खड़ा और तू पिटता है, देख जूजो को कैसे मैं मारता हूँ.
Is So he like an integral part of the story or something? I messed up something about it. no, 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 no. no, 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 no. Like He he's just a bandit. He's actually a bandit raiding Hirata. But इसके पहले एक sumo warrior था. He was serving one lord. बंदा literally वो lose करने के बाद he was just a bandit leading that yeah, clan of his. yeah, exactly. And to be So honest, वो तो एक memory Hmm. sequence था. Not exactly like Yes, it it was a does. memory sequence. या एग्जैक्टली ऐसा yeah. उसका कोई रेलेवेंस नहीं था, लेकिन हाँ अगर हिराटा आप ना जाए तो आपकी फाइनल एंडिंग में कुछ फर्क भी जरूर पड़ता है, तो हिराटा जाना जरूरी है बिकॉज यू फेस लेडी बटरफ्लाई देन, तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट है I पार्ट haven't. उसका. Yeah, I basically not rage quit the game, but I stopped playing at Lady Butterfly because I basically couldn't beat her for the first time when I first played the game. And I think I will beat her this time because I'm much better at playing this game now. So yes, I'm Okay. excited to fight her again. And I think I'm just gonna talk a bit about the general gameplay of Sekiro. So Mhm. it was a Miyazaki basically choose two archetypes. One is Mhm. samurai, second is ninja. So he Mhm. wanted to make a game about those characters, and he finally chose ninja because it Mhm. was more, active gameplay. Let's just say samurai is very grounded. It's cool, but it is very grounded. For example, Mhm. we can see Ghost of Tsushima, really Mhm. cool combat, but it is very grounded in Japanese history and all. So Miyazaki basically pick a shinobi, a ninja, because you can do a lot of things with that. You can make a lot of different things with it. The traversal, I think it's the most advanced traversal system in any FromSoft game so far. I don't think Mhm. Elden Ring have a that advanced traversal system with grappling hook, jumps, and double jumps and all. Does it? Combat wise, I said that combat wise Sekiro is there. It has a level. It can create a benchmark in future as well. So, Even Wukong, the Black Myth Wukong, which is coming, is pretty identical to what we witnessed in Sekiro. मुझे ऐसा लग रहा है जो हम उसमें करेंगे. So it created a benchmark. To be honest, with all due respect to Elden Ring, yeah, other series as other combat as well. With all due respect, I'm not bashing anyone, but I'm still saying no one can even touch Sekiro's combat. Yeah, to Sekiro be is like a honest. very To be honest, different yeah. kind of game. Let's just to say. be honest about the traversal systems, right, in Elden Yeah. Ring, um, you can like only do most of the traversal with a horse. Like जैसे torrent के ऊपर बैठ के there is this whirlwind like whirlwinds across the lands between जिसपे अगर आप torrent के ऊपर बैठ रहे हो, if you're like from a ground position, it can just fling you to a topward position. That's the only bit of the traversal that we found, and this was during exploration, not Yeah, during exactly. But Combat. should we even count it as traversal because it's more like a lift that will make you reach different parts of the game. It's not Yeah, like active traversal. You can do it all the damn time. yeah, exactly. Because, and to be honest, the see, the physics is totally different. It is South Pole and North Pole, to be honest. We So can't there really is, compare them yeah, basically. there is no point even we can compare Elden Ring with Sekiro. There is no point. But no point. but the point is, Sekiro has a different level. So as Knight Um, shared his experience, yeah, yeah, I just wanted to add a tad bit more to the learning curve, if I can, if I yeah. can. Actually, I was coming to that. Actually, जो Ichna ने कहा, the learning curve is very steep and it's satisfying. But the Yeah. best part of it is that the learning curve never stops. Even after you master the deflection, even after you master the game, you can still get even better, even more efficient with all the mechanics of the game, and just be a Correct. complete god in everything. Like, I'm pretty sure you guys have seen Ongbal fight, right? Ongbal's videos of Sekiro. He's a Oh god. man, He's a Yeah, god in this. yeah, man. So those kind of movements, the way he uses prosthetics, the way he traverses through the arena, the way he moves around the bosses, it's just completely different level. So that's the Mesmerizing. That's mesmerizing. It's just mesmerizing. Yeah. mesmerizing. Yeah, Yeah. he completely dances with everyone. That's literally what Sekiro, I think, it was supposed to be. Like what Miyazaki envisioned. Like he wanted players to dance with his characters, and he does that beautifully. This is one of the most important point that Rendo shared is that in other games you fight, in Sekiro you dance. This is done. the main thing. You dance. You Exactly. dance in Nice Sekiro. one. And just look at this Sakura dance move. Mhm. It yeah, Yeah. it was amazing when you hit that stuff with the lightning effect. So Yeah. it is completely different. And uh, Rando mentioned that guy named Ongbal. I also saw some of his videos.
That guy is literally that showed that how much he devoted his time, his patience in that game, and literally he came out as a perfectionist in that game. To be honest, Exactly. he defeat boss at his will. लाइक तो ये चीज है इस गेम में, अगर आप अच्छा खेलते हैं, अगर आप समझ गए, तो आप अपने तरीके से इस गेम में बॉसेस को मार सकते हो. जरूरी नहीं है कि फिर डिफ्लेक्शन ही चलती है. वही. Very Yeah. And like plus, one of a kind game, Sekiro, definitely. Because I have played so many action adventure games, like so many action adventure games and hack and slash games like Onimusha, Devil May Cry, Metal Gear Revengeance. None of those games have like a combat like this. It's completely different beast in itself. Yeah, exactly. Metal Gear Revengeance, that is amazing game. That was Yeah, amazing. that is yeah, that's amazing. a It's an game. That amazing was game. But amazing. Yeah. यहाँ पे since Devil May Cry का बात आ गया है, there is another thing that we can actually see. Devil May Cry itself has an amazing combat system. We cannot deny that, huh? Absolutely, Yeah. yes. Absolutely, that's just god level. But then again, on flip side, Sekiro also has at least an, if not better, equivalent to Devil May Cry, despite having a lesser moveset than in comparison to Devil May Cry. That is really something to put a really thought into it, like how simplicity can actually lead to better game design. It has potential to reach better game design. Yeah, on that particular point, I just want to come up with Rando. That Rando, uh, see, you are exploring the areas in Sakiro. That badassness in that character with the combat. I just want to portray this question a different way. The badassness in this game, from the very beginning, that shows after that moment when Genichiro decapitate your hand in the game. Then again you rise out of ashes. Then you go with a vision to just protect your master, just to get that revenge. That badassness, which can be replicated in the combat stuff in this game. Just put the light on this particular part. That the Should badassness in the combat in this game. what does baddestness mean actually? I honestly do not understand Badassness that means word. Something if you awesome. the awesomeness Awesomeness. your Okay, okay, player is baddestness. badass, Okay. fearless. हाँ हाँ If हाँ I हाँ हाँ हाँ. put it in that way, fearless. Yep. Okay. थोड़ा सा headphone का काम है तो I was not exactly getting the word. But anyways, Okay. so yeah, coming Fearlessness. to that point, I think that's actually not just badass, but actually reflects a lot about the character Sekiro himself. How Hmm. he is someone who has a lot of resolve in him to perform his duty without like at any cost. बिकॉज Hmm. एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, जो इनिशियल कटसीन होता है गेनिचिरो के साथ फर्स्ट फाइट पे जहाँ पे उसका हाथ कट जाता है, वहां पे जब वो सोर्ड ड्रॉ करने का ट्राई करता है ना, ही एक्चुअली कैन नॉट फाइंड हिज सोर्ड. उसको थोड़ा मतलब ढूंढना पड़ता है सोर्ड के लिए. आप लोगों ने नोटिस किया है हाँ, कि पता नहीं उसका कट सीन हाथ पे. हाँ हल्का सा ऐसे हाँ ऐसे हाँ, होता है. Yep. वही वो ढूंढ नहीं पाता है. दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ ही हैव बिकम लाइक रस्टी इन हिज ओन आर्ट. लेकिन Yeah. उसके वो डिफीट के बाद, because of his resolve, he got up and then went ahead and again got back his skill level, even got better at it, and then went ahead to kind of save his master and fulfill his duty. So that actually brings in a lot of like as a character itself, it creates a sense of badassness and awesomeness in the character itself. बट आपने जो कहा कि कॉम्बैट के हिसाब से कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसके हिसाब से लाइक इनिशियली it I think I would give it to the progression system in this game. If that's fine with you, like to progress initially आप जब start करते हैं game पे, the only thing that you have is deflection. आप deflect कर सकते हैं. But as you keep on going, as you keep on fighting other enemies, आपका जो arsenal होता है, आपके पास अलग अलग तरीके के प्रोस्थेटिक्स आ जाते हैं. आपके पास अलग अलग टाइप के स्किल मूव्स आ जाते हैं, एंड उनको आप इंटरचेंज करके यूज करके एनिमीज को मोर एफिशिएंटली आप डिफीट कर सकते हैं. वो जो सेंस ऑफ प्रोग्रेशन रहता है, इट्स जस्ट फील्स रियली ग्रेट. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Yeah, exactly. जिस तरीके से रैंडो ने बताया that to be honest, if you are going along with the game, you from the very beginning, आपके पास
of initial stages where you have the deflection part. The more you play, the more you learn. Then you'll get to know the different skill sets, as well as you'll get the different levels of prosthetics. You'll have different things to have, like Ako sugar, Yashurika sugars. You have Gokan sugars. Your different things. So all this stuff makes you more fearless in this game, and the experience you will get after all these stuff, the satisfaction you get out of all these stuff is totally different. So with this particular thing, I want to, yeah, या एक्चुअली वो पार्ट में और एक पार्ट ऐड करना चाहता हूँ। लाइक yeah, स्टार्टिंगली हम खुद के प्लेयर के साथ ही देख सकते हैं कि मतलब इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं गेम, वो डर डर के खेलते हैं हम लोग। हाँ, जब बाद में पहुंच जाते हैं हम लोग, चलो आगे हाँ, जाके मारते हैं, भाग भाग के उनके पास जाके मारते हैं उनको। मारते हो, एग्जैक्टली। वही दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज लाइक इट्स अ लाइक अमेजिंग साइकोलॉजिकल फेनोमेनन की मतलब साइकोलॉजिकली कैसे वो गेम हम लोग को इफेक्ट करते हैं हम लोग को मेंटली। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब आप पहली बार सकीरो खेलते हो, आपके स्टेप होते हैं यूं, ऐसे पीछे आगे पीछे। जब आप सेकंड टाइम खेलते हो, आपका गार्ड ऐसे रहता है और आप फिर धीरे धीरे आगे जाते हो। जब आप तीसरी बार खेलते हो, तो आप भाग कर जाके ऐसे गोल करके स्लैश मार के फिर फाइट स्टार्ट करते हो। और जब आप चौथी बार जाओगे ना, आप बस ऐसे वॉक करते हुए जाओगे उसकी तरफ। Backstab. हाँ, बस Now सिंपल। I'm the boss. Now you're not नाउ the boss. आई एम Now द I'm the बॉस। boss. मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तू रुक, मैं तेरे को टेंशन नहीं है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरे को नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूँ। तो यहीं पर ही मैं हैशटैग को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। हैशटैग, यस मुझे कॉम्बैट में आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए with the reference of prosthetics, the usage of prosthetics, the inclusions of prosthetics, the levels of prosthetics जो इस गेम में आपको हेल्प करते हैं in order to defeat enemies, in order to overcome the hurdles। उस बेसिस पे आप बताइए कि with prosthetics ये गेम का कॉम्बैट कितना और इवॉल्व होता है। विथ प्रोस्थेटिक मैंने पर्सनली प्रोस्थेटिक इतना ज्यादा यूज नहीं किया क्योंकि उनको जो मटेरियल था वो काफी रेयर था टू फाइंड, या पता नहीं मैं गलत खेल रहा था। बट एक मुझे फायर क्रैकर वाला काफी पसंद आया, स्पेशली गार्जियन एप की फाइट में। एंड उसी फाइट में जो वो भाला जैसा था ना लंबा, जिससे उसके मुंह का सेंटीपीड निकलता है, वो दोनों वो मुझे हाँ बड़े हाँ, पसंद आए एंड काफी यूजफुल लगे, और क्रिएटिव वे लगा कि प्रोस्थेटिक्स का भी यूज किया जा सकता है किस वे में। लाइक वो सिर्फ ऐसे नहीं थे कि कहीं भी यूज कर दो, वो बॉस फाइट में यूज हो रहे थे। कोई भी ऐसा था ना अगर एनिमी जिसका वो कीड़ा निकलता है मुंह से, तो वहाँ अच्छा यूज हो रहा था उसका। तो प्रोस्थेटिक मैंने सिर्फ ये 2 यूज किए, बाकी तो मैंने कोई प्रोस्थेटिक यूज किया नहीं वैसे पर्सनली। फायर क्रैकर का जो हैशटैग ने नाम लिया है, मैं एक एक कर्टेसी दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली वो जो फायर क्रैकर होता है, वो होता है रॉबर्ट फायर क्रैकर्स। जो, और रॉबर्ट से याद आया, जब आप सेनपो टेम्पल में आप जाते हो, तो वहां पर आपकी एक नाइट से फाइट होती है, जो गिरते हुए बोलता है रॉबर्ट, तो हाँ 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 एक लंबा बोलता है। इसी बात पे देखो, जैसे बोला कार्तिकेयन का हाथ उठा, जरूर कोई इंसाइक्लोपीडिया वाला एक इंटेल आने वाला है। यस कार्तिकेयन। Okay, yeah. So, speaking about Robert and his firecrackers, right? Robert is actually that armored warrior's son. या तो एग्जैक्टली। वो दोनों actually जापान को travel करके आए थे from the southern seas. If you read that crackers lore as well, उसमें item पे description दिया that it is some very high level powered fireworks hailing from the southern seas. अगर हम इस story पे देखते हैं ना, Robert is actually suffering from a disease. या He is probably on the stage of passing. And जो armored warrior थे ना, you encounter him perfectly at that Senpo temple because they wish to seek the monk's help to prolong Robert's life. ओके। And as mentioned by RP sir as well, firecrackers like they can be useful against beast type apparitions because they help with the distractions bit. जिनकी So, रेड आइज होती है। वो बुल वाली फाइट में भी काफी यूजफुल था। और तो इसके प्रोस्थेटिक काफी क्रिएटिव थे। लाइक बाकी गेम्स में असैसिन क्रीड वगैरह में काफी ज्यादा प्रोस्थेटिक दिए थे, ऐसी टाइप की चीजें दी होती हैं, बट वो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर किसी इंस्टेंस पे यूज की जा सके। वो ऐसे कि तुम कभी भी यूज कर दो। इसमें काफी क्रिएटिव वे में था एंड वर्थ इट था यूज करना, यही कहूंगा। बट नेसेसरी नहीं था, मैंने इतना यूज नहीं किया, मेरे को मटेरियल नहीं मिल पाता था उसका। But overall, as per you, it's a fun part when you're using prosthetics. a very good combat mechanical से काफी ज्यादा प्यारा। तो जैसे कि आयुष ने बोला कि एक फन पार्ट है, एक फन एलिमेंट लेकर आता है।
ऑल्दो कि ये इतना नेसेसरी नहीं है, अगर आपका स्किल सेट अच्छा, आप डिफ्लेक्शन अच्छे हाँ कर सकते हो, लेकिन ये है कि अगर आप प्रोस्थेटिक यूज कर रहे हो, अगर आप मॉर्टल ब्लेड यूज कर रहे हो, तो ये है कि एनिमीज को आप और जल्दी उनको कवर अप कर सकते हो। जैसे कि रैंडो ने जो मेंशन किया था, दैट ओंगबाल नेम, वो प्रोस्थेटिक्स को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करता है। एंड द वे ही यूजेस द प्रोस्थेटिक भी यूज करना इसमें इतना आसान नहीं है। यू नीड टू फाइंड द करेक्ट टाइमिंग। आपकी टाइमिंग करेक्ट नहीं है तो आपका पूरा वो कॉम्बो खराब हो सकता है। सो यू नीड टू फाइंड द करेक्ट टाइमिंग कि आप कब, लेट्स से इफ यू आर doing that Ashina slash, the Sheena slash, so you need to find the correct distance, you need to find the correct timing, क्योंकि इसमें जो सामने वाले आपसे फाइट कर रहे हैं, दे आर इक्वली यू कैन से इक्विप्ड एज अ ह्यूमन, टू बी ऑनेस्ट। वो एक नॉर्मल एआई नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल का एआई है। वो भी डॉज जानते हैं, वो भी डिफ्लेक्शन जानते हैं। सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रोस्थेटिक को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो। तो यहीं पर ही मैं कार्तिकेयन से इसको एक डिफरेंट टाइप ट्विस्ट करके पूछता हूँ। कार्तिकेयन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रॉबर्टो, जब आप इसमें डिफरेंट एनिमी से फाइट कर रहे हो, लेट्स से मैं आपको इसी वे में पूछता हूं, यू आर इन सेनपो टेम्पल, आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। व्हेन यू आर इन बोधिस्तावा एरिया, आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। व्हेन यू आर हेराट, आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है। कहीं आपको स्टेल्थ भी करना पड़ता है, बिकॉज आपको पता है कि और कहीं कभी कभी इतना होता है कि आपके पास बंच ऑफ एनिमीज आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इट्स लाइक एट दैट मोमेंट इस गेम का कॉम्बैट कितना रिस्पॉन्सिव है। देखो, किसी भी गेम में कॉम्बैट का रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। अगर मैंने अभी रिसेंटली मैंने एल्डन खेला है। एल्डन में क्या है कि मैं इतना बोलूंगा कि रिस्पॉन्सिवनेस कम है थोड़ी, कम है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सकीरो, आपका रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा है। आपका प्लेयर आपके इंडिकेशंस को बहुत जल्दी पकड़ता है। मूव सेट बहुत फास्ट है। सो द पेस इन दिस गेम, कार्तिकेयन, द रिस्पॉन्सिवनेस इन दिस गेम, जो आपके बटन मैशिंग पे जो वो रिस्पॉन्ड करता है आपका प्लेयर, एंड द पेस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट, उसके बारे में बताइए। So about the pace of this game, let us actually like have a look at what the word shinobi means. अगर आप वो कटाना obtain करने के बाद आप देखते हो ना, अगर वो डिस्क्रिप्शन में देखते हो, shinobi may must not forget to learn how to only deal in death, but must learn how to provide mercy. एकदम एक मंत्र है उसके, एक सेकिरो के कटाना पे, it's right there on his blade. And being a shinobi as well, they were trained to be fast paced. They were not trained like, अगर आप इस पे भी देखते हो ना, a shinobi's main goal is not to provide damage to his enemy, but it is to provide a damage to his posture. It is to एग्जैक्टली। provide damage to his posture. बंदा लिटरली ऐसे नहीं है कि हाँ एक सामुराई जैसे फॉर ऑनर में एक औरची की तरफ से he just comes in running, एकदम ऊपर ऊपर जंप करके एक स्लैश मार के ऐसे स्लैशेस मारते हैं, ऐसे नहीं है. Just like Ghost of Tsushima, as I can relate this game with that as well, in a manner of speaking, it would not only help you to understand that ki, हाँ, you need to analyze the environment around you, analyze who your enemies are, what are they capable of, and जैसे हमारे क्रेटोस ने गॉड ऑफ वॉर में बताया था to Atreus and this thing, Mimir, that all enemies have a weakness when they were questioning about Baldur's vulnerabilities. So इसमें भी Sekiro also knows that उनके enemies जो लोग है in his surroundings, they would definitely have some weakness. It is all up to the player to understand what type of enemies they are, and as discussed about the items, like for example जो different sugars है, like Akko sugar, Gaichin sugar, याशरिका। some may tend to help you in providing vitality and posture boost. Some may tend to like provide you invisibility. Some may tend to like provide you with resistance to posture The damage, deflections, then and so on. So and yeah, like for example, like H Knight was talking about butterfly's experience, right? So we all know that Lady Butterfly deals in a lot of illusions. yeah,
So इसके लिए भी एक आइटम तो होती है लाइक वो जो Yeah, you need to break the seed. snap seeds. Snap Snap seeds, seeds. like they're all important items that you can be used. It can be used against bosses. Yeah, as hashtag had mentioned, the use of prosthetics. They're not meant entirely for your offensive. थोड़ा सा defensive भी use करते हैं, and not only to obscure but sometimes to distract your enemies as well. जैसे one would think that the Sabimaru can be paired up with the katana because थोड़ा वो poison damage deal करते हैं. ऐसे भी नहीं है. Or like you can use the Robert's firecrackers sometimes to distract enemies to your position, and you can evade to another position using stealth. Or you can use it to distract beast type enemies. The opportunities are endless. It is up to the player to decide with what route Sekiro goes through and how they deal with it, and if possible, with Something what items. I Yeah. want to add something regarding the Yeah, prosthetics. sure. They Sure. basically unlock another layer in combat. They basically unlock another layer in combat. They unlock additional moves if you upgrade them. For example, the axe attack after you basically swing the axe, you can swing sword as well. Same Yeah. with the throwing what we call them. Sorry, I don't remember the name. Shurikens. Shurikens. So if you throw the shurikens, you can do a sweeping sword attack. So they basically unlock an additional moves and additional layer in combat. You can use them for defense or offensive, and there are a lot of ways you can use them. For example, firecrackers can be used to distract enemies like the bull, or you can use the axe to break shields for weaker enemies and kill them just one hit. So they are very useful in overall combat if you know how to use them basically. सो जैसे कि हम सबने आपके साथ शेयर किया कि कॉम्बैट कितना इसका डिफरेंट है और क्या क्या इसमें चीजें हैं, प्रोस्थेटिक्स हैं, यू हैव शुगर्स विद यू हैव डिफरेंट मटेरियल्स विच हेल्प्स यू इन कॉम्बैट. तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक डिफरेंट एक सिनेरियो प्रेजेंट करता है इस गेम में, एंड इट इज अमेजिंग. तो यहाँ पर तो बात हुई कॉम्बैट की. अब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जो कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम सबके चहीते, हम सबके प्यारे बॉसेस, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे. और यहाँ पर मैं हैशटैग को पूछना चाहता हूँ, जैसे कि ईशिन के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, इसको बहुत मजा आया. हिज कंपनी, हिज मीट्स बहुत पसंद आया इसको. तो आज हैशटैग अपने पूरे दिल की भड़ास निकालेगा जो इसने ईशिन के साथ फेस करी. मुझे अब तक याद है जब मैंने सकीरो का फर्स्ट टाइम एंड किया था इन द वेरी फर्स्ट स्ट्रीम. रात के 2:30 बज रहे थे जब एक फाइट स्टार्ट हुई थी, जबकि मैं इस गेम को कई बार खेल चुका हूँ. बट वो जो मूवमेंट था, क्योंकि क्या था कि जो उसमें एक जो फादर आउल, शिनोबी आउल होता है, उसमें जब आप उससे फाइट करते हो तो क्या है, उसका जो अटैक पावर है ना वो बहुत स्ट्रांग है. वो एक अटैक में आपका पॉस्चर लेवल एकदम बढ़ा देता है. उस समय मेरी इतना लेवल नहीं था बिकॉज मैं एक गो में सकीरो कर रहा था, तो मैं अपग्रेड नहीं कर रहा था. दैट वाज टोटली नॉन अपग्रेड. लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरा पॉस्चर लेवल बहुत जल्दी बढ़ रहा था, तो उसको हराना वाज अ डिफरेंट थिंग. और पूरी गेम वाज डिफरेंट थिंग. ईशिन तो मर गया था, ज्यादा नहीं लगा था उसको, एक आध उसमें मर गया था, लेकिन आउल को जो मिटिगेट करना था उस पॉइंट पे, दैट वाज टोटली डिफरेंट. बहुत बहुत हार्ड था वो, टू बी ऑनेस्ट. तो इसी पॉइंट पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बॉसेस के बारे में. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेकर आना चाहता हूँ, अगेन आई विल गो विद द सिंक, द रैंडो रूकी. So Rando, your favorite boss in this game, as well as your experience with the bosses, your favorite boss and your experience with the bosses, and कैसे आप समझते हो कि इस गेम में जो बॉस डिजाइनिंग है, how it literally gives you the experience. सबसे पहले तो स्टार्ट करता हूँ फेवरेट बॉस के लिए. फेवरेट बॉस, इट्स अ टाई. One, first and foremost, I love the father. आउल का जो बॉस फाइट था, ये हिराटा स्टेट वाला नहीं, वो वाला मैंने फाइट नहीं किया क्योंकि I never reached that part. इस बार शायद जाऊँ, देखते हैं. I love that fight. And secondly, जो गार्डियन एप का फाइट था, वो बहुत मजा आया था मुझे. बहुत एपिक फाइट था वो. That was no holds barred. No. It was like और मतलब दोनों फाइट में एक चीज
एक चीज आ रहा था कि मतलब आई वॉज कॉन्स्टेंटली ऑन एन ऑफेंसिव, क्योंकि अगर पीछे हट जाता हूँ वो लोग पूरा ओवरवेलम कर लेते हैं मुझे हमेशा। तो दी ओनली ऑप्शन वाज आई हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स देम, उनको स्पेस नहीं दे सकते। स्पेशली गाड़ी हाँ ने, वो पीछे गैस छोड़ के भाग जाता है, मैं भी उसके पीछे पीछे भाग जाता हूँ, कहाँ भागता है, रुक वहां पे। एंड दोज वर दी बेस्ट एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया कि गार्डियन का जो वो सरप्राइज था ना सेकंड फेज का, वो सरप्राइज में मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे देख ही लिया था अनफॉर्चुनेटली। बट स्टिल इवन डिस्पाइट दैट मजा आया था वो लोग फाइट करके। और बाकी ओवरऑल जो बॉसेस का मतलब लाइनअप है, lineup is very varied, and despite being the same loop, combat loop की deflect attack same combat loop, उसके बावजूद भी मतलब बॉसेस हर एक बॉस अलग अलग मतलब आइडेंटिटी ला देता है, कि बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर ऑफ कोर्स देयर अटैक पैटर्न्स आर वेरी डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स देयर जो उन लोगों का जो नॉर्मली कॉम्बो अटैक्स होते हैं, वहाँ पे उन लोगों का बहुत वेरिएशन आ जाता है। जैसे गेनिचिरो का एक ही कॉम्बो है गेनिचिरो का, उस कॉम्बो पे वो बीच बीच पे थोड़ा गैप दे देता है। हाँ वो पार्ट फर्स्ट फर्स्ट मुझे थोड़ा मतलब डिस्टर्बिंग लगा, कि मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं डिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, सडनली रोक देता है, उसके बाद मेरा डिफ्लेक्शन टाइमिंग ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर से अगर ये मैं इशिन का फाइट पे, जो लास्ट बॉस फाइट है, वहां पे उसका कॉम्बो सारा स्किल बेस्ड कॉम्बोज है। इचिमोंजी मार देता है या फिर अशिना क्रॉस मार देता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन हाँ, एज आई सेड कि मतलब आंसर इज द सेम, डिफ्लेक्शन। बट वो डिफ्लेक्शन कैसे हम लोग करते हैं, कब करते हैं, उसका मतलब एक अलग टाइमिंग आ जाता है। तो उसके लिए इट कीप्स मी ऑन द फिट all the moment. I cannot get distracted in it. So I like that about the bosses. और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? मैं भूल गया, सॉरी। ये ना आपका जो मेन बॉस है, मतलब आपको कितना मतलब द एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट बॉसेस वो आपने शेयर कर दिया कि यस द टाइमिंग, यस यू नो द डिफ्लेक्शंस, यू नो द पार्ट, बट द पॉइंट इज हाउ टू यूज इट, दिस इज द मेन थिंग। हर बॉस के साथ डिफ्लेक्शन की टाइमिंग अलग है, किसी पे डिले टाइमिंग होती है, किसी पे स्पॉन्टेनियस टाइमिंग होती है। एंड जैसे कि रैंडो ने बताया, रैंडो इट इज लिटरली हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर गेम दैट कभी कभी क्या होता है, गेनिशिरो को अगर आप हिट करने जा रहे हो, वो भी हिट कर रहा है, आप रोकते हो, वो भी रोक देता है अपने मूव को। तो ये जो इसमें एआईज है ना, दे आर वेरी वेरी एडवांस टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट्स लाइक कि आप लिटरली किसी ह्यूमन बीइंग से आप 1v1 कर रहे हैं इस गेम में। तो बहुत ही एक रिफाइंड इसमें जो एआई है वो इसमें शो होता है, और टू बी उसपे ऑनेस्ट। और एक चीज ऐड करता हूँ, क्योंकि मतलब हाँ, एंटायर गेम फिर से डिफ्लेक्शन पे है, लेकिन दो बॉसेस ऐसे हैं जहाँ पे डॉजिंग वर्क्स बेटर। एक्चुअली मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे वो दो बॉसेस, जो एक मिनी बॉस है और एक मेन बॉस है? देखो, अगर आप डॉजेस की बात कर रहे हो तो दे आर वेरी इफेक्टिव। देखो, डॉजेस जहां तक मैं बोलूंगा कि मिनी बॉस में तो मुझे जो डॉजेस मुझे लगा था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट वाज विद चेन डोगर। चेन एग्जैक्टली, डोगर, वही। हाँ, चेन डोगर के साथ आपको काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके डॉजेस, क्योंकि एक तो पहली बात है उस वो मिनी बॉस क्या है, मैं अपना पॉइंट रख ही देता हूँ। मुझे लिटरली चेन डोगर की फाइट बहुत मजेदार लगी थी। रीजन बीइंग, उसमें तो कहते हैं ना तुमने एक सांड के साथ तुम बंद हो गए हो। ब्लेजिंग बुल तो सांड है ही, बट असली सांड वो है, क्योंकि एग्जैक्टली। वो बंदा कहता है, एक तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, वो कहीं से भी तुम्हें पकड़ लेगा यार। रेड तुम आइस, रेड आइस। भाई मतलब हद है। मतलब मैं बोलूंगा भाई, लिटरल डाइव मारता है वो, जॉन्टी रोड्स बन जाता है, वो जॉन्टी रोड्स है उस गेम का वो। तो मैं ऐसा लगेगा कि वो बहुत दूर है, लेकिन वो दूर नहीं है। विद अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो डॉजिंग जैसे रैंडो बता रहा है, तो एक तो मुझे उसमें डॉजिंग की बहुत इंपॉर्टेंस लगती है। बाकी रही बात और उसकी, तो मतलब डॉजिंग की एक मिक्सअप है। मेन का मुझे ऐसा जब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेन में मैं डिफ्लेक्शन ही होते हैं। हाँ, बाकी गार्डियन एप में भी आपको कई बार थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन करना पड़ता है, या फिर कभी आपको डॉज करना पड़ता है। जूजो द ड्रंकेट से आप काफी डॉज करके उसके बैक साइड पे जा सकते हो। तो बहुत से ऐसे हैं चीजें, बट एक्चुअली ओवरऑल। हाँ हाँ, बोलो बोलो।
हाँ नहीं कंप्लीट कीजिए प्लीज कंप्लीट हाँ नहीं बस अब यही मैं बोलना चाहता कि मैं मेन अच्छा बॉस तो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, बट हाँ चेन डोगर के साथ आपका साइड मतलब जो होती है डॉजेस वो इम्पोर्टेंट। हम्म। एक तो पर्सन चेन ओवर के साथ डॉज करके फाइट करते हैं, ऐसा लगता है I'm like some ओवरपावर्ड एनिमे कैरेक्टर, बहुत अच्छा फील होता है ऐसे। और हाँ सेकेंडली जो मेन बॉस के बारे में बोल रहा था मैं, वो डीमन ऑफ हेट्रेड हेट्रेड जो है उसके साथ डॉज करना बहुत इफेक्टिव लगा मुझे, हाँ लेकिन उसमें भी है। यप वो यप बहुत ट्रू डॉज ट्रू बेस्ड गेम ट्रू। फाइट है। उसमें तो बस खड़े हो जाओ और बस लगा दो झड़ी। मैं तो मैंने तो मुझे अब तक याद है, मैंने उस बॉस को जब ट्राई किया था ना, मैंने उसको खेला ही नो हट पे था, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको पता ही नहीं चलता कि वो काइट से आपको जाना है उस एरिया में। हम्म। जब आप एंडिंग करते हो, एंडिंग में हम्म एक तो आप मतलब इशिन की तरफ जाते हो, एक ऊपर काइट होती है, वो काइट को पकड़ोगे तो डीमन ऑफ हेट्रेड वाली जगह पे जाते हो आप। तो वहां पर फर्स्ट फर्स्ट प्ले थ्रू में तो था गया, मैं गया ही नहीं था। सेकंड प्ले थ्रू हम्म में भी नहीं गया था। जब थर्ड प्ले थ्रू किया था ना, वो मैंने नो हर्ट किया था। नो हर्ट किया था तो नो हर्ट में ही मैंने उस बॉस को सीखा और नो हर्ट में ही मारा था। मुझे पता नहीं हम्म था मेरे पास कितने गॉड्स हैं। अब मैंने मेरे चैनल पर भी है, मैंने नो हर्ट ही खेला था उस बॉस को फर्स्ट टाइम जब मैंने उसको मारा था। सो क्या एक्सपीरियंस था वो। और लिटरली जैसे कि रेंडो ने बताया, उसमें डॉजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉजिंग इंपॉर्टेंट है एंड डिफ्लेक्शंस भी होती है। जब वो अपने फुट को ऊपर ऐसे करके दो बार एक तो ऐसे मारेगा फिर नीचे को लेकर आएगा, तो दोनों में हम्म आपको डिफ्लेक्शंस करनी पड़ती है। बहुत चीजें हैं उस गेम में, मतलब उस फाइट में, तो कंप्लीटली डिफरेंट। और अगर आपके पास वो कौन सा होता है वो जिसमें हम अपने उसको लगा लेते आता हैं, है। नहीं जो हेडलेस को मारने में काम आती है, ओ स्वॉर्ड पे अच्छा लगाते अच्छा इवेंट वो कन्फेटी, इवेंट कन्फेटी। कॉन्फेटी, हैं। हाँ कॉन्फेटी डिवाइन कॉन्फेटी। कन्फेटी, डिवाइन कन्फेटी भी बहुत यूजफुल है डीमन ऑफ हेट्रेड, वो हम्म उसको बहुत सही डैमेज देती है। हम्म। तो और डीमन ऑफ हेट्रेड तो लिटरली वो थोड़ा क्लेरिक बीस्ट टाइप भी लगता है ब्लडबॉर्न नहीं, से। बट ही इज एन वो एपरेशन मतलब टाइप डार्क एनिमी सोल्स है ना। बहुत तो जबरदस्त है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो तो एक एपरेशन टाइप एनिमी तो है ना। या हाँ हाँ। एग्जैक्टली। सो इट एक्चुअली वर्क्स। सो जैसे कि रेंडो ने बताया अपना एक्सपीरियंस, तो इसी एक्सपीरियंस पे और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे प्यारे हैशटैग। अब मैं इस क्वेश्चन से पहले हैशटैग समझ गया कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, वो समझ गया, मुझे पता है हैशटैग का। हैशटैग, यस जब आप सकीरो कर रहे थे, मैं आपकी स्ट्रीम पे बीच बीच में आता था, तब मैं यस एल्डन कर रहा था। यस हैशटैग आप बस मुझे ये बताओ, इशिन द स्वॉर्ड सेंट, यस दैट बॉस, मुझे उस फाइट के बारे में आप बताओ, योर एक्सपीरियंस, योर रियल टाइम एक्सपीरियंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, योर फेवरेट बॉस इन दिस गेम। और तीसरा, द लाइनअप इन दिस गेम, द लाइनअप ऑफ बॉसेस इन दिस गेम, किस तरीके से आपको उसने आपको एज अ प्लेयर इवॉल्व किया है। तो मेरा फेवरेट बॉस तो है वो थ्री मंकीज वाला। मैंने अरे इतना क्रिएटिव बॉस गोल्डन फाइट स्पिरिट नहीं राइट। देखी गेम में। इट वाज नॉट हार्ड बट काफी ज्यादा क्रिएटिव था कि एक सुन नहीं सकता है कि देख नहीं सकता है, एक की आवाज आती है दिखता नहीं है। वो मुझे बड़ा ही प्यारा बॉस फाइट लगी थी एंड मैं विश करता हूँ इतनी क्रिएटिविटी बाकी गेम्स में भी होती, लाइक उसको सोचने में उन्हें एक साल लगा होगा एटलीस्ट ऐसा बॉस बनाना है। और सबसे हार्डेस्ट तो इशिन ही था ऑब्वियसली। और मैं सच कहूँ तो मुझे बाकी कोई बॉस हार्ड नहीं लगा इस गेम में। 1-1.5 घंटा फंसता था, मैं मार देता था। पर जो और जब तक इशिन तक पहुंचा मैं ऐसा था कि इस गेम हार्ड है पर इतनी हाइप क्यों है कि हार्डेस्ट है, मुझे उतनी नहीं लगी। लाइक ब्लडबॉर्न के लेवल की लगी, इतनी ज्यादा नहीं लगी। डार्क सोल या एल्डन रिंग ज्यादा हार्ड लग रही थी इससे। और मैं ऐसे था अच्छा कि चलो लास्ट बॉस है खत्म करते हैं। फिर लगा पता मुझे लास्ट बॉस को मारने, टोटल गेम मैंने उस वक्त खेल ली थी आई थिंक 30 आवर्स के आसपास। लास्ट बॉस को मारने में मुझे लगे 15 से 17 आवर्स मोर, लाइक ऑलमोस्ट हाफ आवर, लाइक आधी गेम का टाइम मुझे एक बॉस को मारने में लग गया। मैंने 8-10 स्ट्रीम्स और की थी एक्स्ट्रा उस बॉस को मारने के लिए। रोज मैं 2 घंटे दोपहर 2 घंटे शाम को खेलता, डेली 4 घंटे का लगातार प्ले थ्रू हो रहा था और डेली 1-1% इंप्रूवमेंट हो रही थी। और वहां जाके लगा पता कि मैंने कितनी ज्यादा गेम इनडायरेक्टली कहूँ तो रश की है, या मुझे ऐसा लग रहा है गेम का फ्लो ये है कि डिजाइन अच्छे से नहीं की गई है बॉस की लाइनअप, कि इतनी ज्यादा डिफिकल्टी स्पाइक रैंडमली आ कहाँ से गई। पिछले बॉस में मार ले रहा हूँ और ये आके अचानक से इतना ज्यादा डिमांड कर रहा है मुझसे, तो मेरे रिफ्लेक्सेस उस लेवल के ही नहीं है, वो मेरे से एक डॉज नहीं हो पा रहा है। एशियन टेस्ट है, आप जो पूरी गेम एक सीखते हो ना, एशियन वो टेस्ट लेता है उसका, हाँ सब है मतलब उसके पास। फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। मेरे को वही तो ना। ये समझ नहीं आया वो बंदूक कहाँ से निकालता है भाई।
वो कहाँ से निकालता है Same. वो ठक 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 ठक। भाई कुछ तो हो, कुछ ना पिस्टल कुछ है। पिस्टल है उसके पास, बस पिस्टल है. एक ही बचा था, वो मैक्स पेन भी बन जाता है, सब बन जाता है वो। He had a katana, he had his katana, he had Tamura's spear and a pistol. 3 weapons थे, and the fourth one was the Tomoe's way. 3 हाथ तो नहीं थे उसके? नहीं 3 हाथ नहीं, नहीं थे. Pistol was in his holster. एक हाथ पे katana, दूसरे हाथ पे Tamura की spear. साइड पे holster था. तो When he, अच्छा, so अरे when he wanted to shoot you, he'll take out the pistol. That's the thing. दो हाथ ही मर, है. मरते वक्त तो हमें दिखा नहीं था। ये देख, हम सब तो मार देता था। है तो गेम ही ना आखिर। गेम ही तो है. वही पर तो। मतलब वही है ना कि बाकी किसी भी गेम में ऐसा नहीं होता है, तो गेम ग्रेजुअली इंक्रीज करती है और एंड में तुम्हें अच्छा चैलेंज देती है। इसमें था कि अभी तक जो तुमने खेली वो 50% चैलेंज था, अब रेस्ट ऑफ द 50% तुम्हें एक ही बॉस में दे दिया जाएगा। आउल वाउल सब हार्ड थे, मैं मानता हूँ, बट कोई भी ऐसा हार्ड नहीं था कि मेरे को तड़पाया हो, मेरा जीना हराम किया हो, ऐसा कोई नहीं था। इशिन में रोज ट्राई करना, मेरे को रोज सपने में आवाजें चन चन चन, और उसके बाद हेजिटेशन इज डिफीट। और उस बॉस को लड़ लड़के तो जो गेनिचीरो था ना, वो ऐसे हो गया था कि मैं घुसता था 3-4 सेकंड में बिल्कुल पैटर्न याद हो चुके थे, जैसे मैंने गेम डेवलप की है, मुझे पता है अब इस मोमेंट पे इसने ये करना है, और उसको चुटकियों मारता था और फिर उस बॉस से लड़ता था मैं जाके। मतलब फर्स्ट बॉस जो था वो मेरे उसके लिए वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरे लिए, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही थी फर्स्ट फेज की, बस लास्ट के 3 फेज बचे थे। और फिर आई थिंक 5 दिन बाद जाके मुझे फील हुआ कि अब जाके मैं इसके थोड़े लेवल के क्लोज पहुंचा हूँ। फिर मैं कई बार उसके फाइनल फेज में पहुंचना, मैंने मर जाना, और वो होना दिन में एक बार, 4 घंटे के प्ले थ्रू मैंने एक बार उसके फाइनल फेज तक पहुंचना, और मैंने फिर मर जाना। और पर इस गेम की ये बात अच्छी लगी मुझे काफी ज्यादा कि डिफिकल्ट है, बट तुम जब मरते हो ना तुम्हें ऐसे नहीं लगता है कि यार शिट गेम या मैं नहीं खेलूंगा, ऐसे होता है मर गया चलो शुक्र है, लेट्स ट्राई अगेन। बड़ी अच्छी सी फील आती है, फेलियर में अलग मजा है इस गेम में। और जब वो चिढ़ाता है ना हेजिटेशन इज डिफीट, वो बड़ा बुरा लगता है। तो बस वही 8 दिन करके किसी तरह उस बॉस को मारा एंड चैन की सांस ली। और मेरा फिर ऐसा हो गया था, मेरे को अब ये गेम खेलनी नहीं है, कोई साल हुए। ऐसा नहीं कि मैं तड़प गया था, पर मेरा ऐसे लगा है मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है इस गेम से। मतलब मैं कहीं जा रहा था, मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैं उनकी बात बस सुन रहा था, दिमाग में मेरे इसी नहीं चला हुआ था उस वक्त। तो मैं ऐसा है, ये जोलो चिप है, फ्रॉम सॉफ्टवेयर का जोलो चिप है ये, कि खाओगे तो मिर्च बहुत लगेगी। जोलो चिप है बेसिकली। पर बहुत प्यारा बॉस था यार, मजा आ गया। लाइक लाइफ की बेस्ट फीलिंग थी उस बॉस को मार के, इतनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, ऐसे लगा मैंने जिंदगी में सब हासिल कर लिया, अब कुछ नहीं बचा। मैंने जब एशियन को नो हर्ड विद नो कूरो चार्म्स एंड डीमन बेल ऑन करके मारा था ना, वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट था। एंड लिटरली इट वाज लाइक अ काइंड ऑफ इट्स अ नो डैमेज। तो नो डैमेज तो नहीं, मतलब उसने मुझे एक स्लैश मारा था, बट ऑलमोस्ट मैंने उसके सारे मूव्स रिफ्लेक्ट कर दिए थे। और जब वो सेटिस्फेक्शन आती है ना, जब आप उस लेवल तक चले जाते हो, हम्म, तो वो डिफरेंट है। और यहाँ पर मैं एक चीज नोट बताना चाहूंगा, सकीरो में जब आप मरते हो, ये बहुत कम होता है कि आपको नहीं पता कि आप कैसे मरे हो। कभी कभी क्या होता है, कोई ग्लिच हो जाता है, या कभी कुछ लगता है कि स्पैम हो गया या कुछ हो गया। सकीरो में जब आप मरते हो ना, आपको पता होता है कि आप क्यों मरे हो, आपको आपकी गलती पता चलती है। सकीरो आपकी गलती बता देती है हैंड टू हैंड, कि हम्म, हाँ तूने ये गलत किया है, डिफ्लेक्ट नहीं किया है तो मरोगे। मतलब जो रूम ऑफ एरर है ना इस गेम में, वो बहुत कम है। काइंड ऑफ आपको परफेक्शन सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको इस गेम ये को तो है। सही ढंग से खेलना है। तो परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सकीरो। सकीरो आपको सिर्फ एज अ प्लेयर ही इवॉल्व नहीं करती, वो आपको परफेक्शनिस्ट बनाकर छोड़ती है। तो ये एक सकीरो का बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है। तो एंड विद दिस आयुष, योर व्यू ऑन द लाइन ऑफ बॉसेस इस गेम में जो आप मल्टीपल बॉसेस से आपने फाइट करी है, हाउ देयर डिजाइन एंड द कॉम्बैट्स इन दैट पर्टिकुलर फाइट्स। तो गार्डियन एप एक काफी अच्छा बॉस था जो कि मुझे याद रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। काफी क्रिएटिव बॉस था, किस तरह वो मरता है, फिर उसकी गर्दन काट देते हैं, फिर एक हाथ में अपनी गर्दन लेके लड़ता है, काफी डरावना था और काफी क्रिएटिव भी था, ऐसे राइट फ्रॉम द हॉरर ड्रीम, जो कि सपना ही आ सकता है इस चीज का, वैसा बॉस फाइट था। फिर वो आता भी बार बार है, वही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट और लाइनअप की बात हम्म, करूं तो हम्म, और मुझे प्रीस्ट एक अच्छा लगा बॉस, काफी ज्यादा, वो भी अच्छा था। बाकी प्री आई डोंट थिंक मुझे लाइनअप में कुछ
कोई व्यू पॉइंट ऐड करना है, तो समझ नहीं आ रहा लाइनअप में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। मुझे तो मिस्ट ऑफ नोबल मिस्ट था, क्या नाम था उसका? हाँ, नोबल में, मिस नोबल, मिस नोबल, हाँ हाँ, मिस्ट नोबल, वो मुझे बहुत हार्ड लगी। हम्म, द हार्डेस्ट बॉस, हार्डेस्ट बॉस एवर। हार्डेस्ट बॉस एवर। मेलेनिया भाई कुछ उसका भी नहीं है उसके सामने। मिलेनिया कुछ, अरे मतलब मैं कह रहा हूँ, मैंने सोच रहा था मैं रेज क्विट कर दूं उसी समय, फिर मैंने बोला नहीं आरपी, गेम तो खत्म करनी है, चल कर ही ले। तो जैसे कि हैशटैग ने अपना एक्सपीरियंस बताया विद द गार्डियन एप, और कुछ आप ऐड अप करना चाहते हैं हैशटैग इसमें? नो, तो जैसे कि हैशटैग ने अपना एक्सपीरियंस बताया विद इशिन, विद गार्डियन एप एंड वो जो एक स्केयर इफेक्ट आता है उस फाइट में गार्डियन एप की, वो जब रोर करता है, वो पता नहीं का क्या लगाता है, फिर वो रोर करता है, वो टोटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट लेकर आता है। और टेरर इस गेम में बहुत, जैसे स्कारलेट रॉट है ना एल्डन में, वो इसका स्कारलेट रॉट है भाई, इतनी जल्दी बढ़ता है एक तो टेरर, और अगर लग गया तो गए, कुछ भी हो तुम कितने ही बड़े सूरमा क्यों ना हो, टेरर लग गया तो गए काम से, फिर कुछ नहीं हो तुम्हारा है। हाँ सकीरो डरता है सकीरो इसका मतलब डरता है कभी कभी भाई, टेरर से मर गया। हाँ, सो इट इज अमेजिंग। यहां पर अब मैं एच नाइट को यहां पर लेकर आना चाहता हूं। एच नाइट, आप अपना फेवरेट बॉस बताओ, बट विद वन थिंग, फाइट्स विद हेडलेस। हेडलेस के साथ फाइट कितनी इफेक्टिव है, और क्योंकि अगर आपके पास राइट इंग्रेडिएंट्स नहीं है, आपके पास राइट आपके पास अप्रोच नहीं है, तो उनके साथ लड़ना इट्स लाइक फायदा ही नहीं है, जैसे मैं टेरर की भी बात कर ही रहा था। तो फाइटिंग विद हेडलेस प्लस योर फेवरेट बॉस इन सकीरो। I never defeated Headless. I never ओके, defeated him. I reached him, tried to defeat him twice, but I died. तो कोई नहीं, तो आप एक राइट पर्सन हो दैट व्हाई दिस हैपेंड, तो जस्ट लेट अस नो। या It's just so hard to defeat him. I can't basically examine his move first of all. He's headless. We fight him in darkness for the first time when we like reach the या first headless. There is basically a message: don't go there. We can't defeat him. या You don't go there. You'll die there. And let's just explore the area. How hard it can be. And I tried to defeat him twice, and I died twice. And I said, "भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे नहीं हरा रहा." I was like, I'm done with you. And ओके, so far, I haven't completed the game, but my favorite boss fight will be the general with the horse. Sorry, I don't remember their names. गोबू ओनिवा। Go to the demon. Yeah, it's like so fun to fight him, grappling him, and deflecting his attacks while he's on horse. And it's a lot of fun. And I'll add another one, the chained ogre. Not because it's difficult, because like कैसे गेम हमें बताता है बेसिकली बॉस फाइट से पहले, जब अगर हम सुनते हैं गार्ड्स की कैसे ही इज अफ्रेड ऑफ फायर. So basically, so it's so easy to defeat him. You can stealth kill him once. So basically, एक health का pool बचता है उसके पास. Then just throw some oil and use your fire stick, whatever we call it, the prosthetic, the fire one, and he'll basically be stunned for few seconds, and you can like chip his health like a lot of time. You just need to do that twice, and you'll defeat him. मुझे एक चेन डोगर में एक चीज याद आई, जब आप एज पर हो, वो जो ड्रॉप किक मारता है ना, और आप सीधा खाई में देख रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, वो Yeah, I जो remember that. वो जो गुस्सा आता है ना उस समय यार लात मार के कौन मारता है यार, मारना है तो पावर बॉम्ब मार, कुछ वैसे मार दे, साला ड्रॉप किक मारता है यार, ड्रॉप किक मार के नीचे गिरा के मारता है। अरे बहुत creative है. ड्रॉप किक ही नहीं, जैसे ऊपर एक आके उस पे होता है, क्या कहते हैं ना, हाँ, पीछे भी उड़ा देता है ना, वो उस पे भी मैं गिरा हूँ नीचे खाई पे, वो उसमें पावर बम एक लेके। उसमें एक पॉइंट होता है, अगर वो आपको पावर बॉम्ब मार रहा है, फिर वो पीछे हाँ, को उछालता है ना, तो एक वही। फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आता है कि आप हुक करके वापस आ सकते हो, तो वहां पर हाँ, भी वो पॉइंट। हो पाया था। तब इसका हाँ, आइडिया फर्स्ट टाइम मुझे पूरा आइडिया नहीं आया, लेकिन गिर गया नीचे में। मैंने जब उसको मारा था ना, तो मेरा फाइनल ब्लो ये था, उसने मुझे पावर बॉम्ब मारा, पीछे फेंका, मैंने हुक करके मारा और उसका डेथ पॉइंट आ गया, मैं साढ़े मेरे को गिराएगा, तू रुक जरा, तेरे को बताता हूँ मैं। रिकॉर्डेड तो है वो, हाँ रिकॉर्डेड है, चैनल पे ही है, तो आप देखना देखना, पड़ेगा। हाँ देखना, जरूर देखना। So, I mean, anything you would like to add on this, Ishnet? Anything else? Excited to fight Lady Butterfly again. I'm afraid to fight her, but I'm excited as well. All the Just best for that, bro. Okay. it's gonna be it's gonna be an I'll do that. experience for I'll you. do that one.
I need भाई to मजा collect the seeds first. I think you वैसे get limited number of them. चैनल जब आप कर लोगे चैनल पे देख लेना लेडी बटरफ्लाई आई थिंक हाँ लेडी बटरफ्लाई वाज फर्स्ट ट्रेंड में हो गया था मुझसे कर दिया था तो आप Really? देख हाँ फर्स्ट ट्रेंड में हो Oh, गया था cool. That's cool. हाँ तो फर्स्ट में कर दिया था सर आपने स्नैपसीड्स यूज की या विदाउट? स्नैपसीड्स हुई थी हाँ स्नैपसीड्स यूज करी थी मैंने हाँ। इन बिटवीन लेकिन बाद में खत्म हो गई तो मैं तो भाग रहा था इधर उधर वो जब वो कर शॉप तो बस मजा आने वाला है श्नेट पेल दोगे आप इजी है बट डिफ्लेक्शन आराम से। तो यहाँ पर जो मैंने एच नाइट से क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैं यहाँ पर कार्तिकेयन से क्वेश्चन पूछूंगा कार्तिकेयन योर फेवरेट बॉस एंड द फाइट्स विद हेडलेस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस गेम में दैट शुगर जो उनके शुगर्स जो हम लेते हैं उसमें जो कनेक्शन है इनका Yeah. So I know like we haven't touched the characters yet, but understandable because time is very short and we have to cover all the topics. या So I'll start off with the headless. Headless in Sekiro, they are actually once formerly the well-renowned heroes of Japan. They have fought in various wars and have served their country proudly. But because of some mishap, because of some dark magic, like अगर आप उनके lore पे देखते हो ना, like they have interacted with powerful inhuman spirits and have gained like dark power. But उसके साथ ही they have just gone mad in power. Like कि हाँ, they have lost their identity, they have lost their selves, and at the end they have lost their own heads. So as Hedge Knight was talking about right here, the first headless that you encountered at Ashina outskirts, I believe that was Ako himself. Yeah. Ako actually probably must have went mad, like एक cave पे literally बैठ के for a long time in the darkness with no idea what you're going to do. So headless in general, they are like apparitions. They are no longer living. They are part of the undead race now. They are apparitions, which means उनको एक touch देने के लिए it will be of no use. You deal damage to them, they're just going to absorb it. They're not going to lose health or anything. अगर उनको damage deal करनी पड़ेगी, you need to bring them into the world of the living. ऐसे they're like just an undead, so there's no tether for them. So Yeah. this is where an item called the divine confetti comes into use. Yeah. And अगर हम थोड़ा इस पे भी इंटरेक्ट करेंगे ना लाइक स्टार्टिंग पे व्हेन यू लाइक हेड टू द राइट साइड वेयर एक नोटिस होगा टर्न अराउंड दिस इज वेयर द हेडलेस रिसाइड्स एक मैसेज होगा ना उस पे तो लाइक इधर ये एकदम एक फॉर्मल वार्निंग दिया है फॉर गेमर्स टू अंडरस्टैंड कि हाँ देयर इज अ बॉस अहेड बट अगर आप एक्सप्लोर करनी पड़ेगी तो ठीक है so unlike the sugars that you encounter in this game it's only are like temporary they tend to like just provide you temporary boosts when you like defeat a headless for the first time with the required amount of items and your stats you will tend to gain their fallen spirit their fallen spirit will actually like stay with you it'll provide you the boosts that you require unlike your unconventional sugars ये तो एक एडेड एडवांटेज है बिकॉज शुगर्स की तरफ से एक बार यूज करेंगे तो वो तो कंज्यूम हो जाता है बट लेकिन द स्पिरिट्स दे स्टे विथ यू दे फोकस ऑन योर द स्पिरिट एम्बलेम्स जो है ना लाइक अगर आप मूव मार रहे हो इट विल कंज्यूम योर स्पिरिट एम्बलेम्स वैसे ही दिस स्पिरिट्स विल डिपेंड अपॉन योर स्पिरिट एम्बलेम्स फॉर द बूस्ट तो दिस इज वन एडेड एडवांटेज एंड मेरे साइड से जो फेवरेट बॉसेस है ना पहला नंबर विल डेफिनेटली बी द डीमन ऑफ हेट्रेड एंड फॉर वन गुड रीजन नॉट बिकॉज ऑफ द बॉस बैटल बट जो वो एक शॉक देता है ना हम सबको मालूम है अबाउट द स्कल्पचर फॉर्मली नोन एज सेकिजो वन आर्म्ड ओरांगुटन द मंकी शिनोबी हम उनके लोर पे देखते हैं ना वी गेट टू नो दैट इट वाज एक्चुअली इशिन हु कट ऑफ हिज लेफ्ट आर्म बिकॉज बंदा वो लिटरली एक शूरा को बनने वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे था ही वाज अ फेल्ड शूरा अगर हम इफ यू लाइक चेक थ्रू द लोर अगेन जब वो लास्ट सीक्वेंस पे व्हेन यू एंड अप एट दिस बैटलफील्ड ना एंड व्हेन यू रियलाइज दैट कि हाँ अरे इज इट पॉसिबल दैट कि ये बंदा लिटरली वो एक शूरा बन चुका है एंड देन व्हेन यू सी लाइक कि हाँ अरे यार the guy who gave you the shinobi fang the prosthetic is actually one of the best bosses in this game यार क्या वो एक शॉकर मिला था उसके बाद में जो बंदा तेरे को मंकी एक्स को दिया है you find it indirectly but फिर भी when you find the monkey axe his weapon when you find the monkey axe his prosthetic and when you encounter him at the final base like at the base of Ashina castle जिधर वो ग्योबू होता है ना and when you feel like अरे बाप रे
ये बंदा एक डीमन भर के अरे he was the guy we knew. जो एक शॉक मिलती है ना, like the guy who helps you throughout the game, he saved your life, he gave you the prosthetic, he taught you how to use it. You have a chat with him over some monkey boost जो वो Sunken Valley पे मिलती है. You recall about the events of the Guardian Ape. Actually, अगर आप Guardian Ape को भी देखते हैं ना, Guardian Ape was actually the one behind Sekiro's partner's passing. You can find that finger inside his stomach. वो एक prosthetic बनती है उससे. It was actually that whistle. the whistle. It was actually Sekiro's shinobi partner's finger. The ape Oh. actually consumed him before. So it's a possible explanation ये है. But जो शॉक मिलते हैं ना वो लास्ट पे स्टोरी रिलेटेड, दैट सेकिजो इज द शूरा, द डीमन ऑफ हेट्रेड. जरूर उस बंदे के पास साबी मारू होगी, वो पॉइजन वाली, वहीं से ही वो गंदी गंदी हवाएं छोड़ रहा था, वो तभी वही वो तो. पचा नहीं था उसको. दैट वाज द पॉइंट, वो डाइजेशन नहीं हुई थी उसकी. एंड सो दैट इज सो and वेरी. and last दो bosses हैं. Two of them which have caught off my eye. Second one was definitely the divine dragon, because the divine dragon was basically the very creature responsible for the events, if I could say in an example, because उस ड्रैगन को एक साकुरा ड्रैगन बुलाते हैं. They call it the dragon of the ever blossom. It is from that very tree which it resided in that ये सब ये dragon's heritage, ये dragon rot, जो पुराने वाले dragons होते ना starting fight sequence पे, they end up spewing out some poisonous liquid. They were the manifestations of the dragon rot disease. एग्जैक्टली. And जब वो dragon को मिलती है ना, you'll find out it has only one arm wielding one huge sword at the end. इसका possible explanation lore पे अगर हम देखते हैं ना, when Takeru actually snapped off a branch from that tree and ended up into the mortal realm, it was possible to explain that why the dragon had only one arm. So बाप रे, एकदम एक god like opponent के साथ fight करने के बाद एकदम वो satisfaction जो मिलती है ना, that was hats off. And the third one was Ishin the Sword Saint, because Genichiro resurrects Ishin from the dead with the black mortal blade, and this was like थोड़ा एक और shocking है. There was a second mortal blade in existence. So ये भी एक और shocking चीज है. So for me the bosses were not like just interesting based on the battle, but जो वो एक shock element देती है ना, like when you learn about the story as much as possible, this is where it hits you the most. सो जैसे कि कार्तिकेय ने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया द लोर एज वेल एज द बॉसेस. To be honest, it is important and it is amazingly done in this game कि आप किस तरीके से आपको समझाई जाती हैं चीजें. अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो जो मुझे लगा इस गेम का जो हार्डेस्ट बॉस था, दैट वाज इनर फादर आउल. लिटरली बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ सकीरो. मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी जाऊंगा ना तो मैं इशन को मार दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है. लेकिन जो फादर आउल है ना, उसको जो फेस करना, दैट वाज अ चैलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फोन चार्ज पे लगाया हुआ, इसलिए आपको ऐसे दिख रहा होगा कि चार्जिंग खत्म हो गई इसकी. सो फादर आउल फॉर मी वाज द हार्डेस्ट बॉस ऑफ सकीरो. सेकंड पे मैं रखूंगा इशिन द स्वॉर्ड सेंट. क्लासिक बॉस है, मजेदार बॉस है. थर्ड पे मैं रखूंगा लेडी बटरफ्लाई, अमेजिंग फाइट. फोर्थ पे मैं रखूंगा एज एन ऑनररी मेंशन, दैट वाज शूरा इशिन आशिना. दैट बॉस फाइट वाज लिटरली लेट. मैं बोलूंगा वो बॉस फाइट बहुत जबरदस्त है. जैसे मिलेनिया का वो जो वाटरफॉल डांस मूव है, वो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये हमारे बहुत ही ज्यादा चीज अगेंस्ट जा रही है. सेम उस फाइट में भी एक मूव होता है एशियन का, जब वो पूरी फायर को चारों तरफ स्प्रेड कर देता है, देन ही कम्स अप विद वन आशीना स्टाइल. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट टाइम खेल रहे हो उस फाइट को, आप उसमें फंसोगे ही फंसोगे. सो दैट बॉस फाइट वाज अमेजिंग एज वेल. तो यहाँ पर हम जल्दी से और पॉइंट्स को फटाफट कवर अप करते हैं गाइस. यहाँ पर हम लेकर आना चाहते हैं द करेक्टर्स किसी भी गेम के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट लेकर आते हैं. तो यहाँ पर मैं करेक्टर वाइज सब पे एक बारी मैं वो सबको एक एक करेक्टर्स बता दे पूछता हूँ. आई एम स्टार्टिंग विद हैशटैग. I'm gonna give you
गेनिचिरो का कैरेक्टर किस तरीके से लगा, उसका जो पेट्रियोटिज्म था फॉर अशीना वो कैसा था? एज अ कैरेक्टर ना, यप। तो गेनिचिरो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को सेकिरो में स्टोरी और कैरेक्टर्स का नहीं लगा कुछ भी पता। लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आई मोटिवेशंस क्या थी कैरेक्टर्स की, या क्यों हो रहा है कुछ भी, जो भी हो रहा है वर्ल्ड में। बस मुझे इतना पता कोई सिकनेस है यहाँ पे एंड ये बॉसेस गंदे हैं, हम अच्छे हैं और हमें वो छोटा बच्चा बचाना है। दैट इज इट। बाकी मेरे को स्टोरी नहीं समझ आई, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो बेसिकली जो गेनिचिरो था वो पेट्रियोटिज्म था, वो पेट्रियोटिस्ट था अपने अशीना को लेके। उसने क्योंकि क्योंकि वो उस एसेंस को लेना चाहता था। वो भी मतलब वो जो लॉर्ड था, जो उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, छोटे बच्चे का, कार्तिकेयन, हिज नेम वाज कूरो। जिसको हम सेव करते हैं, कूरो 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 कूरो। तो वो कूरो का भी एसेंस अपने अंदर लेना चाहता था, जस्ट टू गेट मोर पावरफुल, ताकि वो अपने क्लान को और संभाल सके। लेकिन इशिन भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो जानता था कि गेनिचिरो भी उतना कंपैटिबल नहीं है इसको सेव करने के लिए, इसलिए वो वुल्फ को आगे लेकर आता है। और जब आपको एट द एंड पता चलता है कि आप इशिन से ही फाइट कर रहे हैं, जो कि आपको बताता है कि कहां पर मॉर्टल ब्लेड्स हैं, कहां पर सब है। सो ये जो पूरा एक सिंक बैठता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। सो गेनिचिरो इज अ ट्रू पेट्रियट। मैं ये बोलूंगा वो बॉस नहीं, बॉस तो है, वो बॉस फाइट तो होती है उससे, लेकिन अगर आप उसको समझो तो वो भी अपनी जगह ठीक होता है, वो डिफेंड ही कर रहा होता है। एट द एंड वो हार जाता है, इसीलिए वो ब्लैक ब्लेड से अपने आप को मारता है, ताकि वो अपने ग्रैंडफादर जो कि ईशन है उसकी प्राइम को समन कर सके। तो इसीलिए वो उसको लेकर आता है और उससे फाइट करवाता है। मतलब खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, खुद को सैक्रिफाइस करता है कि अशीना के जो लास्ट वॉरियर्स थे वो जहां तक प्राइम पे लड़ सकते हैं वो लड़ेंगे, और वो लड़े थे। एंड और आप ये देख सकते हो जब वो आप उसमें वुल्फ मारता है उसको, तो वो एंड दी एंड अप्रिशिएट करता है वुल्फ को। तो दिस इज द स्पोर्ट्समैनशिप, टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूंगा, स्पोर्ट्समैनशिप, ऑनर इन दिस गेम। सो रैंडो he was basically a tragic hero who turned to dark side. एग्जैक्टली। सो यहाँ पर मैं रैंडो से क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। रैंडो, एमाज कैरेक्टर फॉर यू। वाइफू मटेरियल वही। That's the best. एमा का अगर देखा जाए लाइक इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट लाइक आई लाइक द मिस्टीरियसनेस ऑफ दैट कैरेक्टर, यू नो, कि मतलब कैसे वो इनिशियली आती है, आके हम लोग के मदद करती है वो, कि मतलब वो हीलिंग गोड के बारे में बोल के और ड्रैगन रॉट को क्योर करके। एट द सेम टाइम बाद में जो शूडा एंडिंग रहता है वहां पे हम लोग को पता चलता है कि शी इज नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट शी इज ऑल्सो ए वेरी गुड फाइटर। एंड really उसका as far as I know उसका ग्रैब वो चेन ओगर के ग्रैब से भी बदतर है। Yes. And yeah, as a character, the point, there is not too much to say about her, but the thing is that the mysteriousness that the developers has given, a mysterious aura that they have given to her is really feels really like attracting towards the character. Like जानने का और मन करता है कि एमा के बारे में और कुछ जानना है हम लोगों को। At the end मतलब मेरा प्ले थ्रू के एंड पे मेरा मतलब वो एक वॉइड रह गया कि मुझे एमा के बारे में और जानना है, उसका हिस्ट्री कैसे है, उसको हु ट्रेन्ड हर, उसको अशीना से इतना लगाव क्यों है, दैट थिंग। एमा ने अपनी जो पूरी लाइफ थी, टू बी ऑनेस्ट, वो इशिन की देखरेख में डिवोट कर दी थी। इवन जो इशिन स्टार्टिंग वो जो ऑर्नामेंटल लेटर मिलता है वो एमा ही देती है, और वो इशिन भिजवाता है फॉर वुल्फ की अशीना। देयर इज अ लिटिल इशू, आई हैव टू गो, मेरे को बुला रहे हैं। श्योर, नो इशू। बाय बाय, थैंक यू। बाय। सो
यहाँ पर जो ऑर्नामेंटल लेटर भी होता है वो भी एमा ही वुल्फ को देती है एंड इशिन उसको बोलता है कि आप वुल्फ को ये प्रोवाइड करो बिकॉज इशिन कहीं ना कहीं ये जानता है कि अगर इस ट्रेजेडी इस जो ये जो रॉटनेस फैल गई है और ये जो सब इशू और एवर ब्लॉसम ट्री को वापस उसके एसेंस को जगा सकता है तो वो वुल्फ ही कर सकता है द लोन वॉरियर एंड एमा टू बी ऑनेस्ट इज अ वेरी ग्रेट कैरेक्टर और इनसाइड गेम लोर अगर आपको कोई गेम में समझाती है तो वो एमा ही समझाती है पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो किस तरीके इवन कूरो के बारे में आपको एमा ही बताती है हाँ ये बात है कि वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप है इस गेम में पूरी लेकिन अगर आपकी चॉइसेस सही हैं और आप और इन डेप्थ इस गेम की डिफरेंट एंडिंग्स अटेन करते हो तो आप एट द सेम टाइम ये भी देखते हो कि एमा बहुत ही ज्यादा टिल एंड वुल्फ से बात करना स्टार्ट कर देती है उसके साथ शेयरिंग करना स्टार्ट कर देती है सो ओवरऑल एमा इज अ वेरी गुड कैरेक्टर व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द इंटेल्स ऑफ द गेम एंड मैं ये बोलूंगा वेरी ब्यूटिफुली रिटन कैरेक्टर बट एट द सेम टाइम जैसे कि रैंडो ने बोला बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है यहाँ पर मैं एच नाइट को लेकर आना चाहता हूँ एक Actually, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर someone has something to say, I guess. या ये श्योर Yeah, just one small point. Just one small point. Regarding Emma. Um, uh, Emma is actually an orphan just like Sekiro. इसलिए दोनों के बीच में एक understanding आई थी. या It was actually Sekiro. It was actually the sculptor who saved her from the battlefield 20 years prior, and she was actually left at the doorstep of Dogen's like medical clinic. Like अगर हम ये ओके स्टोरी पे देखते हैं ना Dogen was the mastermind behind the Shinobi prosthetic in actuality. He was also the doctor behind the healing god and other whatnots we can point out. ओके And as for Rando's question, right, who taught Emma the skills that she needed to be the gentle blade? It was actually Ishin. Ishin trained her in the ways of the samurai. एशियन एशियन ने ट्रेनिंग दिया तो दैट्स व्हाई शी वाज अ हार्ड That's बॉस why टू she बी was a ऑनेस्ट hard boss. अगर मैं बता रहा हूँ उसका पॉस्चर लेवल बहुत जल्दी जाता है अगर उसका पॉस्चर लेवल थोड़ा और स्ट्रांग होता ना तो वो और स्ट्रांग फाइट दे सकती थी सो ये या Yeah, sorry, just a small snippet of like food for thought. ये फॉर्म सॉफ्टवेयर का ना हर एक गेम पे ये एक ट्रेंड रहा है जो एक फीमेल बॉस होगा जिसका मतलब ऑफेंस इज लाइक गॉड लाइक लेकिन उसका पोस्चर बहुत वीक होगा हर एक ऑलमोस्ट हर एक फॉर्म सॉफ्टवेयर पे है ये आप डार्क सोल्स पे देख लो सिस्टर फ्रीडा आई थिंक सिस्टर फ्रीडा हाँ उसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है देन यू हैव इन ब्लडबॉर्न यू हैव लेडी मरिया रेडिया एल्डन मरिया रिंग पे अभी अभी आ गया है मेलेनिया और यहाँ पे आपने कहा यहाँ पे सेकिरो पे एमा भी वहाँ पे सेम मैकेनिक्स पे मिलेनिया पे ब्लीड इफेक्ट बहुत ज्यादा Malenia, तेज what, होता है what do you think about Malenia, RP sir? What do you think about Malenia regarding this? यार मेलेनिया इज लाइक मैं आपको इतना बोलूंगा मेलेनिया वो तो खैर मेल्डन में डिस्कस कर लेंगे बट मेलेनिया का ये है कि अगर आप ब्लीड इफेक्ट उसको दे रहे हो ना बहुत जल्दी लगता है तो उसकी जो हेल्थ वो अगर आपको मारकर अपनी हेल्थ रिगेन करती है तो एट द सेम टाइम आप उसको डैमेज भी बहुत अच्छा डील करते हो सो अमेजिंग इट्स एन अमेजिंग फाइट टू बी ऑनेस्ट वो एल्डन के पॉडकास्ट में डेफिनेटली विल शेयर द थॉट्स तो यहाँ पर एच नाइट से मैं शेयर कर एक चीज पूछना चाहता हूँ एच नाइट आपने अभी पूरा सकीरो आप खेल रहे हो तो स्टार्टिंग में मैं फिर आपसे यही पूछ लेता हूँ वुल्फ एज अ कैरेक्टर वो कम बोलता है बट उसकी तलवार Yes. बोलती है योर योर टेक ऑन दैट I I love this like archetype of character, you know, the strong stoic character with a heart of gold. I love this archetype of character. So there are many characters in gaming industry like that. For example, Kiryu Kazama from Yakuza series. I don't know much about Wolf because I haven't played the game so far that much. But yeah, he seems like cool-headed, calm type, and with mysterious past that we'll find out in the story as the story goes on. But yeah, he seems like really interesting character who's devoted to his duty to protect the Kuro, and yeah, he's an honorable shinobi with a heart या of gold. एग्जैक्टली सो जिस तरीके से अभी एच एक्चुअली नाइट ने हेलो बताया या क्या वुल्फ के कैरेक्टर में और एक चीज मुझे ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब उसका एक श्योर कैरेक्टर डेवलपमेंट फेज भी होता है जो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे लाइक इनिशियली जब वुल्फ रहता है गेम पे ही वाज लाइक जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ अदर्स उसका खुद का मतलब एक रैशनैलिटी नहीं रहता है जस्ट उसको ऑर्डर मिला है ये करो तो उसके हिसाब से वो करता है बट बाय द Ironfall. हाफ ऑफ द गेम
he actually start making his own choices, especially in the part we can see where his father gives him the choice to actually follow his father's order or help the divine heir. तो वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट पॉइंट मुझे उसका उसका बहुत अच्छा लगता है वुल्फ का. जैसे वो स्टैंड लेता है उस समय, कूरो हाँ के लिए हाँ हाँ स्टैंड एग्जैक्टली. लेता है. ही एक्चुअली स्टार्ट्स टू थिंक फॉर हिमसेल्फ कि मतलब मुझे बस किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो करना है, मुझे क्या चाहिए वो मैं सोचता हूँ. एंड बाय माय वैल्यूज आई वांट टू सर्व कूरो, आई वांट टू सेव कूरो. या So आई वांट टू I सर्व like that part. मास्टर. सो अमेजिंग अमेजिंग. तो कैरेक्टर वाइज भी वुल्फ बहुत ही एक आपको, मैं बोल रहा हूँ ना, कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो बहुत तलवार नपातुला बोलता है और सही बोलता है. एंड उसकी तलवार बोलती है. सो दिस He's इज a द straight to the point guy basically. एग्जैक्ट, स्ट्रेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. और उसकी तलवार भी स्ट्रेट टू द पॉइंट ही होती है. खत्म. सो योर फेवरेट कैरेक्टर इन दिस गेम कार्तिकेन, या फिर मैं आपसे एक सही उसमें पूछता हूँ, इशिन as a character for you? Comparing to the closest opponent who is powerfully equivalent to Wolf, we can say it as Ishin, because when you see 20 years before, जो starting वाले cutscene पे when he fights against General Tamura, वो एकदम he's fighting against a humongous brute. Literally वो एकदम खून bleed करके करके like as a samurai he still stands strong and fight. The one thing that we see in him is determination and honor to fight for not only something that is good but something that is righteous, which would determine his stance as a samurai. एंड जब वो एकदम तमुरा को एकदम पैर पे वो एक स्टैब देकर एकदम वो मिकी काउंटर भी करते हैं ना वो एक कट सीन पे, अच्छा ये करके ही स्लैशेस ऑफ द नेक. सो एक्चुअली उस टाइम पे क्या हो रहा था, ही वाज जस्ट लीडिंग अ कू अगेंस्ट द सेंट्रल फोर्सेस मिनिस्ट्री अगेंस्ट तमुरा सोल्जर्स. एंड कंसिडरिंग थ्रूआउट हिज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जब वो बीट एज ए सामुराई और जब वो टेंगू ऑफ आशिना की तरफ से वो पोस्ट करते हैं ना, there is an absolute clear cut definition. From his name we can understand why he was called the sword saint. He has written, ये तो एक renowned samurai भी नहीं है, एकदम एक renowned author भी है. He has written so many esoteric texts about his ashina arts that Sekiro can also even learn how to master them. But you have to Final, do a side quest for that. You have to kill those rats. you have to kill the rats, you have to kill those assassins actually for that. But it was also like through Ishin as well. We he actually prevented the sculpture from becoming a shura at the end. थोड़ा सा he even understood a slight amount of folly with Genichiro's pathway of his like आपने बताया था ना, वो एक patriot था. He was ready to do anything to protect Ashina from further harm. तो थोड़ा सा he was able to recognize the folly in this path. Exactly. वो एकदम लाइट हेडेड है, बट एट द सेम टाइम ही इज एब्सोल्युटली पावरफुल. एंड आई विल कोट दिस वेरी स्पेशली, एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स द एक्सपीरियंस दैट काउंट्स. Exactly. Experience that counts. So जैसे कि अभी कार्तिकेय ने बताया बहुत ही स्वीटली कि हाँ भाई, जो इशन है वो इट्स अ टोटल पैकेज. टू बी ऑनेस्ट, ही इज एन ऑथर, ही इज अ फाइटर, ही इज अ सेवियर, एंड he's everything. To be honest, he's the soul of this game. To be honest, he is soul है इस गेम की. मतलब एक मेन कैरेक्टर ना होते हुए भी ये एक मेन कैरेक्टर बन सकता था. टू बी ऑनेस्ट, इशिन भी एक मेन कैरेक्टर बन सकता था अगर सकीरो. मैं तो अगर मैंने अभी स्टार्टिंग में जब ये गेम जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि अगर मैं इसका कोई एक नेगेटिव पॉइंट बोलूं सकीरो में, तो मैं इसके कोई कॉम्बैट पे नहीं बोल रहा, मैं इसकी किसी पे नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि सकीरो 2 अगर नहीं आएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. सकीरो 2 आनी चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूं या तो जैसे प्रीक्वल निकाले, जैसे आरडीआर ने किया. मैं तो कहता हूँ इशिन के साथ एक निकाले ये कोई गेम जिसमें हम ऐसा इशिन खेल सकते हैं कि इशिन ने किस तरीके से वो फाइट्स करी. या फिर मैं चाहता हूं कि जब अगर आप इसकी डिफरेंट मल्टीपल एंडिंग्स करते हो तो आप एक इसमें एक ड्रैगन रिटर्न एंडिंग आप अटेन करते हो, जो कि इस गेम की बेस्ट एंडिंग है. जब आप जो द चाइल्ड ऑफ द रिजुविनेटिंग वाटर्स और को भी बचा लेते हो और कूरो को भी बचा लेते हो, जब आप इनको अटेन कर लेते हो तो आपको ड्रैगन रिटर्न एंडिंग मिलती है. या फिर आप इससे कर सकते हो कि हाँ, जब ये अब अपने नए लॉर्ड के साथ आगे जाएगा तो क्या ये आगे फेस करेगा सकीरो.
तो आई एम रियली एक्साइटेड कि अगर Sekiro 2 आए, अगर नहीं आता तो मुझे बहुत दुख लगेगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेंचाइज थोड़ा आगे बढ़े। Yeah, but फिर भी अगर हम एक एंगल पे देखते हो ना, एशियन did not lose his arm, so we cannot see the return of the prosthetic mostly. But शायद we can see something related to Asian in one end or the other. We'll get those Sheena styles ना, then proper आशीना Sheena स्टाइल्स तो रहेंगे, but there will be something like how do we say, एकदम एक टूल की तरह से होगा, but it cannot be the तो उसको prosthetic, बंदूक something कैसे मिला special. वो हाँ उसका उसका हाँ, रिवील it होगा। could be the pistol as well, something special for Asian. हाँ कुछ तो, हाँ पिस्टल, हाँ भाई मैं तो वही से मैंने खेलना है उसी से, फिर तो ब्लडबॉर्न हो जाएगा, जैसे कोई मारे पिस्टल मारो स्टैगर करो। सामुराई is a cowboy, एकदम गन के साथ हैट लगवा के। अरे भाई क्या ही हो जाएगा फिर तो। सो बहुत 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 ही क्लासिक गेम है। अगर मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर या किसी कैरेक्टर के बारे में बोलूं तो टू बी ऑनेस्ट सबने बोल ही दिया है। तो मैं अगर अपना कोई कैरेक्टर चूज करता हूं तो मुझे एशियन एज अ कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग लगा था। मतलब मजा आ गया था जिस तरीके से वो, उसका स्टाइल है, उसका चलने का ढंग है, जब वो फाइट में आपकी तरफ बढ़ता है, उसका बात करने का तरीका, उसके बात करने में एक ह्यूमर होता है। जब आप कभी भी ईशन से बात करो, वो ह्यूमर है उसके बात में। साके उसको बहुत पसंद है, साके, ही लव 100%, साके। या 100%. उसको साके पिलाओ तो वो आपसे, और ऑब्वियसली बात है किसी को भी पिला दो वो आपसे अच्छी तरीके से बात करेगा। तो वो बात करता है अच्छे से। तो सेट ओपी बाय द वे। तो अब ही इज द गीगा चैट। या एग्जैक्टली का चैट टू बी ऑनेस्ट। सो गाइस आज लिटरली पहले तो बहुत मजा आया, मैंने जितना भी टाइम यहाँ पे रखा आया मैं, मुझे बहुत मजा आया। सकीरो बहुत दिल के करीब एक गेम है, और लोग भी आना चाहते थे बट ड्यू टू देयर स्केड्यूल्स वो नहीं आ पाए। मैं भी आज मेरा ऑलमोस्ट पॉस ये हो गया था कि मैं पॉडकास्ट नहीं आ पाऊंगा, बट समहाउ किसी तरह सही टाइम पे आ गया। And thank you everyone for sharing your intels on this game to be honest. And हाँ एक पॉइंट मैं इसमें रख देता हूँ, और कि जब आप इस गेम को खेलते हो तो आप इसमें डिफरेंट एंडिंग्स भी अटेन कर सकते हो। जैसे कि फादर, एक इसमें आप शिनोबी आउल से फाइट करते हो, एक आप इसमें फादर आउल से फाइट करते हो। इफ यू वांट टू फाइट दैट फेज ऑफ शिनोबी आउल, दैट उसके लिए आपको प्यूरिफिकेशन एंडिंग चाहिए होती है। एक और इसमें एंडिंग होती है जो कि होती है ड्रैगन रिटर्न एंडिंग। और एक और एंडिंग होती है कि अगर आप हिराटा स्टेट नहीं जाते हो तो आपको एक काइंड ऑफ, बहुत ही एक काइंड ऑफ, वो एंडिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप वन गो में सकीरो कर रहे हो तो अगर आप हिराटा एस्केप करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सारी एंडिंग्स इसको अटेन करो, आपको मजा आएगा। ड्रैगन एंडिंग बहुत जबरदस्त थी टू बी ऑनेस्ट, ड्रैगन रिटर्न एंडिंग, बिकॉज उसमें आपको काफी कुछ लोर पता चलती है, और आपको काफी फाइंडिंग्स देखनी पड़ती हैं, आपको चॉइसेस आपके करेक्ट होने चाहिए बहुत, तब आपको वो ड्रैगन रिटर्न एंडिंग मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पे इस गेम को एंडिंग करो। अगर आपने नहीं किया, आई वांट रैंडो, आप इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे गेम को एंड करना, डिफरेंट एंडिंग्स अटेक करना, मजा आएगा। एच नेट यू गोना बी फाइंडिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉस फाइट्स एवर टू बी ऑनेस्ट, और मजा आ जाएगा आपको जब आप लेडी बटरफ्लाई से फाइट करोगे। एंड कार्तिकेय तो खेल ही चुका है, तो मैं भी खेल चुका हूँ वो। अब लिटरली मैं उस दिन क्या हुआ, एल्डन के बाद मुझे हैंगओवर सा हो गया था, तो मैंने वो रिलीज करने के लिए मैंने सकीरो उठा लिया, और लिटरली जो गेनिचिरो पे भड़ास निकाली मैंने, बेचारा उड़ Nice गया video था। by the way, huh? Nice video. थैंक यू। तो थैंक यू एवरीवन हु एवर जॉइंड इन अच्छा टुडेज। हेलो। या एक एक्चुअली हम लोग चैट पे एक ही क्वेश्चन एक आया था, तो आई थिंक इफ वी कैन वी शुड आंसर दैट इफ या श्योर वी कैन श्योर मेक श्योर, देम व्हाट्स द जस्ट 5 क्वेश्चन? मिनट्स। तो क्वेश्चन था कि वर्ल्ड सर्पेंट एंड सेकिरो में जो सर्पेंट है आर दे कनेक्टेड स्पीसीज? Definitely नो no. नो, देयर No, इज no, नो no. कनेक्शंस एक्चुअली। जो वाइट, मैं बताता हूँ, जो सर्पेंट है ना, बेसिकली क्या होता है, ही इज द प्रोटेक्टर फॉर द ड्राई लिवर। वो जो उसमें होता है वो उसके प्रोटेक्शंस के लिए होता है, और वो जो वैली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो वैली प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इट्स अ वैली प्रोटेक्टर थिंग इन दैट पर्टिकुलर गेम। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड सर्पेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन है। इट्स जस्ट एन एडिशन जो कि गेम को और एक निखार कर आपके सामने लेकर आता है। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। देयर इज नो कनेक्शन ऑफ वर्ल्ड सर्पेंट एंड दैट। उसका नाम कार्तिकेयन कुछ बोलता है, व्हाइट नूडल।
तो लेकिन हाँ, उसको जो आप ऊपर से स्टैब करते हो जब, क्योंकि आपको डिफरेंट उसमें ड्राइड लेवल लेने पड़ते हैं, सर्पेंट लेवल लेना पड़ता है अगर आपको डिफरेंट एंडिंग्स लेने होते हैं, क्योंकि जब आप कूरो को रिजुविनेट करते हो एट द एंड, तो उसमें उसका काफी रोल होता है उन इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए। तो वो जो उसकी जो ब्लो आप मारते हो उस पे उसको मारने के लिए सर्पेंट को, दैट इज वेरी 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 एपिक मूव। और वो जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया उस फाइट को, दैट इज अमेजिंग। Okay, so फाइट तो hope नहीं that है खैर। answers your या hope that या answers your question, Pratham Parekh. Thank you for एक joining. बार And Yeah, हाँ और एक guys, क्वेश्चन आ गया है, आंसर करे या one small फिर? follow-up, guys. Just या one small या follow-up. Yeah, so thoda sorry for cutting in between. Um, No, it's not. regarding that serpent वाले question, right? जो हम great serpent encounter करते हैं ना Sekiro पे, it's actually a Japanese related serpent only. Like the people there, they just worship it as a god of the earth. And जो Norse Oh, mythology serpent है ना, वो world serpent. That is Jormungandr, या Thor's enemy, and it actually circles all the 9 realms in the Viking mythology. It bites या its own tail, and थोड़ा सा it was believed to exist till the end of time जब Ragnarok होते हैं. So they're both different both are serpents. different, there is no connection, there is no connection to it. Yep. And yes, the next question, Rando, was yeah. There is another question from Ancient Lizard. Thank you for joining in this stream. And do you really think Sekiro deserves Game of the Year? Star Wars Jedi is 100 times better. see, Um, to be honest, I didn't play that game. Rando can put up because Rando भी खेल रहा है इस गेम को. तो टू बी खेल चुका हूँ. ऑनेस्ट, या सो टू बी ऑनेस्ट मैं ये बोलूंगा, मैंने जडाई मैंने नहीं खेला है, और मैंने सुना बहुत है कि जडाई इज अ वेरी 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 क्लासिक गेम, बिकॉज वो मिक्सचर है बहुत गेम्स का। बट सकीरो एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टफ है, मैं ये बोलूंगा। पहली बात है, आई डोंट बिलीव इन कंपेयरिंग द गेम्स। सेकेंडली मैं ये बोलूंगा कि सकीरो का जो कॉम्बैट है, इट इज टोटली डिफरेंट टू व्हाट वी एक्सपीरियंस इन द अदर गेम्स। इवन जेडाई भी उससे काफी डिफरेंट होगा, हाँ थोड़ा एसेंस होगा, बेंचमार्क आते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा सकीरो का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। और मैं ये समझता हूँ, मैंने अभी तक जेडाई नहीं खेला तो मैं नहीं बता पाऊंगा इसका सही से, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि सकीरो के कॉम्बैट लेवल को मैच करना वो एक डिफरेंट है। अब जैसे मैं बोलूंगा सीडीपीआर ने विचर 3 बना दी, वो अब खुद उस लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, मुझे इतना पता है। हाँ विचर 4 जैसे बनेगी ठीक है, लेकिन जो सकीरो का कॉम्बैट ने जो एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया ना, उस पे उस तक उस लेवल पर आना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा होगा इन फ्यूचर। बट नहीं, लेकिन जेडाई वहां तक होगी, जेडाई जेडाई का अच्छा कॉम्बैट होगा, लेकिन सकीरो के लेवल तक का वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज मैंने नहीं खेला। हाँ इस चीज का आंसर रैंडो ज्यादा अच्छा दे पाएगा। बात क्या है कि the thing is that Jedi's concept is very different and Sekiro's concept is very different. Jedi पे आपका एक completely Star Wars based game है, हाँ मतलब action adventure ही है, but उस पे आपका they focused a bit too much on the storytelling and platforming aspect of the game. Sekiro on the other hand, storytelling है but their major focus is on the action combat of the system. So दोनों को compare करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. And their personal preference will always affect your choice regarding this. आपको एंड अगर अभी आप बोल रहे जेडाई आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, डेफिनेटली यू कैन लव दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि आप शायद स्टार वॉर्स के पुराने फैन हैं एंड जो जेडाई ने जो एनकम्पास किया है स्टार वॉर्स का यूनिवर्स को, दैट इज वेरी वेल डन। मैंने देखा नहीं स्टार वॉर्स, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा कुछ पता है स्टार वॉर्स के बारे में, तो उसके हिसाब से आई कैन टेल दैट जेडाई encompass that concept very well. But at the same time, Sekiro also has its merits, which are like sky high. So it's एग्जैक्टली completely comes into personal preference. Personally, for me, and personally for RP and the rest of the panel members also, I think Sekiro takes the game of the year. But if you think that Jedi deserved it better, then power to you. That's your like you can keep या that. एंड We respect that. सकीरो इज अ ट्रू डिजर्वर ऑफ गेम ऑफ द ईयर। उसने You're कहते हैं ना, right. उसने अर्न किया वो स्पॉट, सकीरो ने अर्न Earn kiya, किया yeah. On to it. है। Hmm. सकीरो ने अर्न किया वो स्पॉट, और जब आप उस गेम को खेलते हो आपको लगता है दैट यू आर प्लेइंग समथिंग स्पेशल। लाइक देयर इज अ थिन लाइन, जब आरडीआर 2 और गॉड ऑफ वॉर का फेस ऑफ हुआ था, देयर वाज अ थिन लाइन। आरडीआर 2 वाज इक्वली क्लासिक गेम, टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माय फेवरेट गेम्स, लेकिन दैट एज दैट गॉड ऑफ वॉर हैड, वो एक जो स्पेशल किक है,
वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। वही Sekiro के साथ है। Sekiro में वो स्पेशल एक हिट है कि जो आपको एक पता चल जाएगा that you are playing something really special. So वो चीज है। We're basically comparing apple to oranges here. Exactly. वही Two वही बात completely है। different We type of cannot games. compare those. We cannot compare. The focus of both those games are very different. तो Very compare different. करना मुश्किल हो जाता है. One is a एक more तो samurai Souls-like with एक तो stories and all, and one is an action-adventure game with mostly focus on the gameplay part with samurai and all. Hmm. Yeah, एक तो Yeah. can't samurais really है, compare them. दूसरे साइड पे स्पेस वाले रिलेटेड है. The one side is space magicians, space samurais, and one side is samurai in Japan. Basically. Yeah. But thank you for sharing the questions. Whosoever shared the question, please may I know the name? The name Yeah, was one was Pratham Parikh, and then another was Ancient Lizard. These two. Ancient Lizard and Pratham Parke. Thank you for sharing the questions, and thank you everyone whosoever joined in this particular podcast and the panel members. It really means a lot. Thank you Rando, thank you H Night, thank you Kaarthekeyan, thank you Mantra for staying so long, and thank you hashtag Ayush for joining the panel point. Yep. So thank you and मजा आया podcast में, and Sekiro is a must play game है at the end मैं यही बोलूंगा. अगर आपने अभी तक नहीं खेला इस गेम को, आप खेलिए, enjoy कीजिए, and yes, you're gonna love the game. And any one of you, please, if you want to put some points to wrap up the stuff, yep, you Yeah, can do. Just nothing to simply say. one thing. Play the game. Yeah, Play just the play the game. game. Play the game. Play the Play game. the game. Play Yeah. the ट्राई game नहीं and करोगे तो पता नहीं चलेगा. Yeah. you're अभी definitely मेरा भी मतलब gonna. जब ओरिजिनली था डार्क सोल्स आई डिड नॉट लाइक इट. मैं सोचा था हार्ड गेम है क्यों बनाते, क्यों इतना हार्ड होने के लिए हार्ड बनाते हो क्या. फिर सेक्यूरो खेलने के बाद पता था कि सेक्यूरो फ्रॉम सॉफ्टवेयर बना था. ठीक है, तो फ्रॉम सॉफ्टवेयर डार्क सोल्स भी बनाए, खेल के देखते हैं. उसके बाद एडिक्शन बन गया भाई. डार्क सोल्स 1 2 3 कंटिन्यूस खेल लिया, एल्डन रिंग के लिए बैठा बैठा रहा मैं वहाँ पे. तो पता नहीं चला. यू हैव टू ट्राई इट. मैं जाते जाते एक मैं खैर इतना मैं टिप तो नहीं, मैं अपनी तरह एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैं टिप तो मैं क्या ही दूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ अपना इस गेम को लेके. आप कभी लोकल बसेस में चढ़ते हो तो क्या होता है कि अगर आप बसेस में अपने आप को पकड़ के नहीं रखोगे तो बसेस की मूवमेंट के साथ आप भी ऐसे 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 हिलोगे, आप कभी गिरोगे, पटकोगे. वो ही सकीरो में है. सकीरो क्या कहता है कि बॉसेस के साथ भाग मत वरना गिर जाएगा, अपनी जगह खड़ा रहे, टेक ऑन द अटैक, अटैक को टेक ऑन कर, किसी चीज को पकड़ के खड़ा हो जा, और वो है तेरा डिटर्मिनेशन. स्टे ऑन योर ग्राउंड, अटैक को आने दे, यू जस्ट वोंट हैव टू डिफ्लेक्ट कर, खड़ा रहे और मूवमेंट को अपने पास आने दे. आपने वहां पर प्रस्ताव लेके नहीं जाना, सामने से वो खुद मरने आएगा आपके पास. आपने मारना नहीं है, वो खुद मरने के लिए आपके पास आएगा. तो आराम से टहलते हुए जाओ, जस्ट होल्ड योर ग्राउंड. और कभी भी गार्ड करके रखते हो तो गार्ड से कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं सीखोगे. जस्ट स्टे नॉर्मल, अटैक आने दो, देन सडनली क्लिक द स्टफ, तब आप डिफ्लेक्शन सही से समझ पाओगे इस गेम की. दिस इज वन पॉइंट फ्रॉम माई साइड. इट इज इंपॉर्टेंट. ये एक चलती बस है जिसमें आपने अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखना है ताकि आप अटैक को समझ पाओ. अगर आप उसके साथ हाथ छोड़ दोगे तो बसेस की मूवमेंट, जैसे बसेस की मूवमेंट के साथ आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ गिर रहे हो. वही सकीरो के साथ आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या करोगे. आप तो आपको स्टे ऑन योर ग्राउंड, होल्ड ऑन टू द डिटर्मिनेशन यू हैव, और बस आप खेलो इसको. Here's a hard fact about the game. Hard fact: you're gonna die more than twice. Shadows die twice, नहीं thrice, 4 times, 5 times, 6 times. infinitesimal दुबारा as दुबारा much चला as you जाता है can. बॉस पे कभी कभी. बस. So thank you everyone whoever joined, and thank you everyone in the panel area. Thank you for joining and sharing your time. आज थोड़ा late podcast हमने किया because timing as usual एक ही दिन मिलता है, family के साथ कहीं important जाना था. So thank you. So it really means a lot. So bye bye, take care, have fun. You guys are awesome. You guys just rock. Stay healthy, stay fit. Bye bye, guys. Take care. Yep. IGP Bye bye. signing off. Bye bye.